Yeah. So let's start. चलो 100 क्रॉस कर गए. Yes, sir. So let's start, sir. So we welcome everyone to Direct Tax Professional Association Chartered Accountant Study Circle. And it is a great pleasure to invite two of the most renowned speakers on GST today. So to start with, I would request Dayashankar Agarwalji, the president, to please give his introductory remarks. Good evening, everyone. Today's discussion will revolve around practical issues in filing of GSTR 9 and 9C for 21-22, which is due on 31st December next month, as we all know, and some recently important amendments in GST law. We all know 9-9C is due now. However, the correct disclosure of all figures is a key issue. There are certain changes in reporting in 9-9C for financial year 21-22. Hence, it becomes important for all of us to know and understand the impact of the same and to deliberate on the same. Today, we have with us Shri Aanchal Kapoor from Amritsar. Please give him a big round of applause. Hence, GST is an ever-evolving law, as you can see from a spread of circulars in the recent past. Shri Vivek Jalan, who will join us a little later, will take us through some of the most relevant changes. With this brief opening remarks, I wish you all happy learning. Thank you very much. Over to Abhishek. So I would request Abhishek, the co-chairman of the Indirect Tax Committee, to please give his remarks on the topic. Thank you, dear sir. Thank you, Shyam. So I would like to mention the fact that almost 5 years, but again, because which we have. Hello. You're audible. You're back. And so 9-9C is a continuous, changes is happening, and it's in 5 years. And despite that, we all the professional need continuous guidance. So in that we have, and it's really an amazing learning for all the members. And Vivek ji is again an eminent speaker for the profession to add all the recent changes which is happening. So again, it's been 5 years and there's GST law changes happening every week. So this is something which we can never miss, and not taking much time, and over to the speakers, and let's have a happy learning. Thank you. Thank you, Abhishek. So before we start off, I would like to read the brief profile of our today's speaker. So we have C. Aanchal Kapoor today. She's a fellow member of ICAI since January 2009 and also a law graduate. She pursued graduation in commerce from Guru Nanak Dev University, Amritsar, and she attained 3rd rank All India in CAPE1 and 2nd rank in North India in CAPE1, and is also placed under the merit list in the university in graduation. She is also having additional qualification on forensic audit and fraud detection. She is a national speaker on GST and has deliberated in around 500 plus seminars and webinars across India. And with the privilege of addressing August gathering of 2,000 more than 2,000 professionals. She is also an approved faculty of National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics. She has also done several certified GST courses, including the course offered by ICAI. She has been a faculty to various certified courses on GST, and she has the privilege of contribution to various ICAI publications from time to time. So before she starts, I would just like to welcome her with a small flower bouquet from DTPA, though it's a virtual session. So we would request you to accept this on our behalf. Welcome, ma'am. Thank you so much, sir. It's such a beautiful gesture, and the flowers that bring smiles on everyone's face. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Over to you, ma'am. The session is all yours. Right. Thank you so much. And I am really obliged to give the deliberation on this elite platform of DTPA. And I am thankful to DS Agrawala sir, whom I consider as my elder brother, that he has always been so supportive.
and always available and so motivational. Thank you so much. And the entire team of DTPA who has made all the efforts for organizing this webinar and letting me connect with all the members. Now we are going on a dual mode, seminar webinar. So it keeps getting mixed, right? And to our lovely audience who is sitting on the other side, I can see the number increasing all the time. So a very, very good evening to all of you. And let me first share the screen so that I will be able to open the chat box also instantly along with it. Right. So meanwhile, I am opening my chat box. Friends, I just request you to be with me all the time so that we can converse with each other through this platform, through this virtual platform, and to the little, because 990, as Abhishek ji was saying, it's almost been 5 years, still we are exploring the things into it. And not to mention, when I was sitting for making this PPT, because I deliberated a few days back on 990, just to locate the amendments, इतना easy way से amendments बनाते हैं, इतने easy way से form होते हैं कि हमें उसका एक word ढूंढने में it took me so much time. So why I'm mentioning so? Because we are here for a little time together, around 50-55 odd minutes. So I want that we should best utilize it. So I request all of you to be with me. So can I see a few thumbs up in the chat box so that I can also get to know who all are sitting there, except Ritesh ji. Ritesh ji, please rejoin. I hope you will be able to hear us. So participants, can I see I think so the participants can interact with us through the chat box. Yeah, I can see. Ashish Maheshwari ji, Ishu Agarwal, Lalita ji, Amit ji, great to see all of you on this platform, right Piyush ji? Now friends, हम सबसे पहले वो सुनना चाहते हैं. I think so Hindi English mix will go. Yes ma'am. Right, all right. So friends, हम सबसे पहले ये सुनना चाहते हैं कि आप ये बता दीजिए चेंजेस क्या आए हैं पिछली बार से. At least we should be ready with those changes. Don't worry, I will give you a proper slide of what have been the changes in the form over the period of time जो हम पहले 17, 18, 18, 19 में दे रहे थे. Then क्या दिया और अब उससे क्या additions हुए हैं. So I will be taking up all that. But before that, because it's now almost going to be the 5th year when we will be making this, I want to ask you one thing from all of you. What is the base of GSTR 9 and 9C? Okay, forget 9C for a time being. Oh, Lalita ji has started putting also, these are the mandatory fields. I will come to it, don't worry. So I ask you, what is the base of GSTR 9? Is it 3B? Is it GSTR 1? Is it GSTR? Is it books? Or nothing? Or mixture of everything? What do you say? So I can see on my screen the answers flowing up. 3B, right? Kajol ji, Ashish ji, अच्छा ललिता जी saying 1 and 3B. अगर हम दो जगह जाएंगे, वो कहते हैं ना दो जगह जाने वाला दोनों जगह से थोड़ा सा भूखा ही रह जाता है कि वहां से खाना मिल जाएगा. Mixture, all right. Sales from GSTR 1 and ITC C. See the divergent views that we are getting. Some saying 3B and books, some saying books, some saying GSTR 1 and 3B, some saying you have to take a mixture. So Amit ji, if I define the mixture in exact terminology, I will give you the practical insight, but please be with me and let's have a look on the current slides. So आप लोग भी कुछ ऐसे ही answers नहीं दे रहे हो? From where we have to pick the figures, wo book say, wo 3B say, and somebody saying the mixture means the correct view, right? GSTR 1 and 3B with analysis of difference. Okay, friends, let me tell you very practically, first of all, hamara first step, because 31st December, we are approaching approximately 1 month and a few days are left. सबसे पहले हमारा काम होता है पहले हम लिस्ट रेडी कर लें. So is the limits of 2 crore, 5 crore still exist? Quick answers in the chat box. Does it still exist? Yes, it do exist. Absolutely correct. It is same 2 crore for GSTR 9 and 5 crores for GSTR 9C. But whenever you are going to make the list,
Please be careful from where you will be picking up the figures. कि मेरे ऑफिस में कितनी GSTR 9 और 9C हमें furnish करनी है, what is my workload? Don't pick the figures only from the books of accounts, the audited books that are available with you. Reason. Actually, now if I come to the turnover, my dear friends, the turnover, the correct word is the turnover for GSTR 9 should be as per section 2 clause 6 of CGST Act. Turnover ka definition. Why I'm saying so? It is not necessary that the turnover which is showing in your books of accounts is a correct turnover. Example, I give you one thing. First, services advance. The advance of services must be in your balance sheet. But for GST purpose, for checking the limit of 2 crore or 5 crore, you all have to add it. Second, the schedule 1 transactions, which are not reported anywhere. The discarding your depreciation chart, the discarding of fixed assets, for which you might not have got the consideration, the sale of fixed assets even. All those changes are required to be made in the turnover in order to check the limit of 2 crore and 5 crore. I tell you how I do so. Whenever you say your staff members to prepare a list, please do mention them that you have to make 3 columns as per GSTR 3B, as per GSTR 1, and as per your books of accounts. And the incomes that are shown in the capital account even. Because there might be cases that the person is receiving the rentals, the person is receiving the commission in the saving accounts, which are not shown in, especially when that is individual PAN. So you might not add it through the P&L account, but that are also to be counted for the purpose of calculation of limit of 2 crore and 5 crores. So this is one of the why I'm saying so you, my dear friends, you know, many of the cases in the past years have popped up जहां हमें ये पता लगता है कि the person was liable to file GSTR 99C due to certain adjustments, but वो adjustment ना कभी हुई और ना हमने उसको देखा और जिसकी वजह से 99C हमने फाइल नहीं की है. So later on, and you know, आप जितना भी past निकाल के देख लीजिए, जितना भी कभी भी GSTR 9 और 9C की लेट फी का वेवर नहीं आया है. Right, we have to check the aggregate turnover right for turnover limit as per section 2 clause 6. Right, now moving ahead, what has been, so this I have already, I will not be reading the law verbatim because I will be giving you the crux of all the things you know already. May I request the host to kindly mute the other participants? I can feel a little bit of disturbance. Yes, of course, sir. Advances for services will be added because those are taxable ones, will be added, right? Financial credit notes will not be considered for the purpose of calculation of turnover because that is not a relevant document for the purpose of GST. That is not a GST document, right? Now, Rahul ji, that is a supply, that is particularly a supply. If it is advance of goods, that is not taxable. For advance of services, that is a supply, and iska jo time of supply hai, wo bhi at the time of receiving of advance hota hai, so it will fall in the year in which you are receiving the advances. And agar aap form bhi dekhenge na, to wahan pe bhi wo aapko advances particularly add karwate hain. Rahul ji, look, where there is a huge difference in the margins, आपका turnover 1-1.5 crore आ रहा है, 2 आ रहा है, and 2 crores तक आपको लगता है sufficient margin है, so such adjustments can be overlooked over even. But where you are on the brink, you are on 1 crore 80 lakhs and so on. So you must be very, very particular in considering. So Lalita ji has asked me one more question. Interest income also to be added. Friends, the question is incomplete. I'm taking it because मैंने turnover का topic touch किया यहाँ पे. Why I'm saying so? She didn't mention that what sort of interest income is it. If I say the interest is coming from the debtors, 100% to be added as per section 15. One thing. Second, if it is interest income from FDRs,
and post office, etc. accounts. No, I know there are double ARs, but please keeping that view aside, that is not a supply because that is not in the course or furtherance of business. That interest not to be considered. Now, coming to third type of interest from unsecured loan, not to be considered. Right? So Lalita ji, I have mentioned all the three possibilities of interest into it. The interest from the debtors is part of the valuation and hence to be considered for the purpose of calculation of aggregate turnover. Now, moving ahead, see the limits are in front of you. What are the fields that have become taxable? Friends, this slide will give you an insight कि okay, कौन से fields mandatory हैं और कौन से fields not mandatory हैं. Wait, I have to change the stylus. Anyhow, just give me a while. All right. So if I talk about that which fields are mandatory and which fields are not mandatory. So, but जो fields 21, 22 से mandatory हुए हैं, that also I have specified in these slides. So you can check that. कौन सा चीज किस साल में change हुई है, that is also mentioned in this slide. Now, but what are the particular changes? Let me come to the next slide. Here it is. First change. पहले B2B transactions के लिए we were not supposed to mandatory give the credit and debit notes separately in column 4J and 4K. Now that option has been withdrawn. It means for B2B transactions, we must give the credit and debit notes separately. In the column 4J, even the amendments have to be given separately in 4J and 4K, and even the credit notes or the debit notes have to be given separately now. So 4H and I has also become mandatory, 4J and 4K. It means gross and then the credit note amount or the debit note amount, and then the total figure will be taken, but it is only for B2B, not for B2C. आशीष में ऐश्वर्या जी वैसे तो आज जस्ट ट्राई कि मैं स्टार्टिंग में ही ये अनाउंसमेंट कर दूं, आज भूल गई थी, आशीष जी ने याद करा दिया. माय डियर फ्रेंड्स, DTPA has arranged this webinar for the benefit of all the members, and I have made this PPT for the benefit of all the members. So don't worry, it will be shared with you all through the platform of DTPA. Right? All right. Chaliye, let's come back. Now, first change, I have already told you, for B2B, you have to give the gross figures, the amendments during the year, and the credit or debit notes have to be given separately. Such condition is not yet made mandatory for B2C. I have already clarified. Now, coming towards the column 5DEF. 5 सुनते ही हमें ये तो पता चल जाता है, अच्छा exempted की बात हो रही है. पहले 3 ऑप्शंस थी उसमें, exempted, nil rated, non GST, ये 3. और बोलते थे कोई बात नहीं, सारी फिगर्स इकट्ठी डाल दो, चाहे exempted की रो में ही डाल दो, only in this does not matter. From this year, non GST supply has to be shown separately. Exempted and nil rated can still be mixed, but the non-GST supply of 5 petroleum products, the non-GST supply of alcoholic liquor for human consumption and all, where there is no levy, have to be given separately in column 5F. Moving ahead, the next change, which is थोड़ा सा डरावना change, why I say so. एक बार बताइए, RCM कितनी तरह का होता है? You know, मैंने slide change कर दी है. Because I need answers from all of you. I have been speaking for so long. I also need some knowledge from your side. RCM is of how many types? From what sort of supplier RCM comes? RCM is from 2 types of persons. First, from the registered persons, and another is from unregistered persons. Great, Mukesh ji. You exactly got the point where I knew it. I will be getting 9394 wala, but Lalita ji and Mukesh ji, I guess, yeah, he made bilkul correct wala, registered persons say and unregistered persons say. RCM, firstly, there was no need
to give the bifurcation that from where the RCM is coming, maybe in 6C and 6D there was option. आप दोनों में से there was no separate requirement कि आपको 6C और 6D का figure separately बताना है कि कितना RCM registered से आ रहा है और कितना unregistered से आ रहा है. Example. Now a person is taking advocate services from two persons. Advocate number 1, advocate number 2. Advocate number 1 has GST number. He might have rental incomes. He has taken GST number. Advocate number 2 has not taken GST number because he was not having any income which is liable for forward charge. Firstly, आप advocate 1 and advocate 2 को क्लब कर सकते थे. इनपुट सर्विस में जाके सीधा 6C और 6D कॉलम में से किसी में भी ऑप्शन था to report it in table 6C or 6D. But now you have to bifurcate the RCM, which is coming from registered and from unregistered person in column 6C and 6D separately. And the change which already was given in the chat box, HSN wise summary of outward supplies. Yes, outward supply summary has been made compulsory but not inward. So outward का अब आपको टेबल में summary जो है 17 में that has been made mandatory. HSN code 6 digits तक देने हैं if it is greater, the aggregate turnover in the preceding year is greater than 5 crores, or 4 digit तक if it is less than 5 crores, right? Now, these were the friends, only these are the changes that has been brought in form from the year 21-22. लेकिन इससे पहले भी कुछ चेंज हुए थे. And what were those changes? Those changes were, पहले जब हम इनपुट्स देते थे, इनपुट्स का आईटीसी बताते थे. इनपुट्स का आईटीसी छोड़ दीजिए, आईटीसी का डिटेल देते थे. सो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी नहीं था. इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स. दे सेड यू पुट इट ऑल इन इनपुट्स. फॉर द ईयर 1920 they made it compulsory कि नहीं, कैपिटल गुड्स का देना है. So my dear friends, the same is applicable for 21-22 also, 2021 and 21-22 also. इसका मतलब अभी भी हमें जो कैपिटल गुड्स है उनका सेपरेट ही देना है, right? Okay, now moving ahead, these are the GSTR 9C mandatory columns. Yes, Indranil ji, absolutely correct you are. So it is for the GSTR 9C. GSTR 9C में भी सारे columns वैसे ही हैं except this 12A to 12D. जो पहले 12B एंड 12C कॉलम थे वो ऑप्शनल थे. पिछले साल का एडजस्टमेंट जो इस साल में किया और जो इस साल का एडजस्टमेंट अगले साल में किया. Now that has even been made mandatory. But let me tell you, ये जब पहले भी ऑप्शनल था, even then we used to feed it and we will continue feeding it. So 12B और 12C जो ऑप्शनल था, बाकी सब जो चीजें ऑप्शनल थी, जैसे एक्सपेंस वाइज जो हेड आईटीसी रिकंसिलेशन था, that is still optional. That is still optional, right? Now, coming towards what are the points which we must keep in mind? Sir, जब हम बाहर भी जाते हैं ना, so we always make a checklist कि क्या क्या लेके जाना है. So when we are going for GSTR 9-9C, then also we need to check again. Yes, annual return 2 करोड़ तक है. ध्यान से फाइल करना. अब तो आदत हो गई है जीएसटी में. You won't be able to revise. Although I received a number of calls stating कि हमारा Tran 1 भी गलत हो गया है जो हमने revise करना था. So please be careful when you are uploading. All the GSTR 1 and 3B for that year must have been filed before. Otherwise, your button will not pop up for the same. And don't forget, जहां पर जीएसटी नंबर सरेंडर हो जाता है तो हम जनरली उसको अपनी लिस्ट से निकाल देते हैं. बट अगर आपका जीएसटी नंबर सरेंडर है लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आपका टर्नओवर लिमिट से एक्सीड कर रहा है, डोंट फॉरगेट टू फाइल जीएसटीआर 9 and 9C for those numbers. Okay, now I need answers from all of you. A person is having a Kolkata division and a Punjab division and a Delhi division.
Kolkata division has a turnover of 2.5 CR. Punjab is having 1.5 CR. And Delhi is having कितना हो गया 3 4 okay only चलिए 1 CR. Now tell me how many GSTR 9 and 9C the person is required to file. A quick answer from all of you. Please be literal with my question, Naveen ji, Ashish ji. How many GSTR 9 and 9C in totality are required to be filed? Absolutely, Lalita ji. One return. Dilip ji, no, not at all. It is GSTR 9, 3, absolutely Naveen ji, and GSTR 9C also 3. What is the meaning and what is the point I want to highlight? If you have branches, but the branches have same PAN number, and on the same PAN number, 3 GSTN numbers have been issued, the aggregate turnover will be clubbed. And when it will be clubbed, the person has exceeded the limit of 5 crores. अच्छा थोड़ा सा exceed कर देना इसको. हाँ, I knew it. थोड़ा सा increase कर देना. ये लीजिए 1.10, right? So because it is exceeding 5 crore in totality needs to be checked. And कभी-कभी ऐसा भी होता है जैसे KPD. Delhi has only 0 turnover. It has 2.5 CR turnover. It has 4.5 CR turnover. So don't forget that you have to file the 9C and 9, both for Delhi office also. Both for the Delhi office also. So in all, full pen wise, the aggregate limit will be checked. And then we have to see for GSTR 9 and 9C. All right, chaliye, let's come back. The form, even if gets read, don't worry, it's not a symbol that you will be getting the notices. It's only a reference कि कहीं कोई 0 extra लग गया है या कोई 0 कम लग गया, so you are supposed to remove that, right? Once GSTR 9 is filed, only then 9C can be filed. Up to we are very used to it and all that. Okay, let me ask you one more question. If I ask you, the person says, अब सुनिए, ये Mr. Lost है. Mr. Lost says, I never knew. उनकी ना एक rent commission income आ रही थी. Commission income was coming in his saving account. कैपिटल अकाउंट में शो कर रहे थे, P&L बैलेंस शीट का पार्ट नहीं था, और मिस्टर एल के पास पैन नंबर है और जीएसटी नंबर भी है इन हिज इंडिविजुअल नेम. My question to you is, and why, whether this commission income will be taxable, yes or no? Whether this commission income will be taxable, yes or no? Quickly. Taxable, you all know that. And this is what you suggested them also. You were supposed to, he said, Acha, I never knew it. Now you say you have to pay it. He's having ITC underlying. My question to you is, what is your suggestion? Whether he can pay it through the credit available with him, or it has to be paid in cash? Credit, or it has to be paid in cash? So Dilip ji is saying cash. All right. Naveen ji is saying cash. Lalita ji is saying credit. How come, Lalita ji? I need the reason for the same. और बाकी ना कैश ना क्रेडिट, पे ही ना करें. जल्दी से फिर लिख दो ना कैश और क्रेडिट in the chat box quickly. I will also get to know who all are sitting on the other side. Maybe आपके नाम, although I'm very poor at remembering names, but थोड़े थोड़े याद रह जाएंगे. Friends, what I want to highlight here is the answer is okay. Mr. S. Chandra ji कह रहे हैं because you are doing it right. Sir सुनिए, अगर मैं फॉर्म के इंस्ट्रक्शंस पढ़ती हूँ, राइट ललिता जी, आई एम कमिंग टू द सेम इशू. अगर आप फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, सो GSTR 9 फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस है, यू हैव टू पे थ्रू द कैश, एंड दैट इज व्हाट यू ऑल वुड हैव बीन सजेस्टिंग योर क्लाइंट टू. बट द क्लाइंट सेज, व्हाट इज दिस? मेरे को तो इतना क्रेडिट नीचे पड़ा, मेरा क्रेडिट पाइल्ड अप है, मैं तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में हूं, एंड यू आर सेइंग मी कैश में पे करो. ललिता जी ने जैसे पॉइंट आउट किया, फ्रेंड्स एक बात बताइए, मैं आज अभी 9 नहीं भर रही हूँ,
क्लाइंट मेरे पास आता है, मेरा एक टैक्स छूट गया है, आप उसको बोलते हो DRC 03 भर दीजिए वॉलंटरी बेसिस पे, वॉलंटरी बेसिस पे। सो जब वो वॉलंटरी बेसिस पे आपको DRC 03 भरने देता है, तो यू कैन यूटिलाइज द क्रेडिट, you can utilize the credit, allows through the cash, absolutely Indranil ji. So it allows to the credit, sorry, it allows through the credit. So अगर मैं पॉपअप विंडो में DRC 03 के एनुअल रिटर्न करूंगी, तो वो मुझे सिर्फ कैश की ऑप्शन देगा, बिकॉज फॉर्म सेज सो, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द लॉ which says that you cannot use your credit which is lying therein. So आप DRC 03 में क्रेडिट भी यूज कर सकते हो. Select the window, जो scroll down करके you select, instead of selecting annual return, select 73 subsection 5 and even the credit can be. अरे बोल देना मैंने पहले 73(5) में भरा था एनुअल रिटर्न, उसके बाद भरी है. So आपकी दोनों चीजें कंप्लाई हो जाती है, because there is no restriction in the law which states that it cannot be paid through the credit. But फ्रेंड्स, इंटरेस्ट के लिए अब तो रूल भी बहुत क्लियर हो चुका है, प्रोवाइजो जो लॉ में इंसर्ट हुई थी. अच्छा, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस बेसिस और नेट बेसिस? अ क्विक आंसर, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस और नेट बेसिस? नेट. मुकेश जी सेइंग नेट. मुकेश जी, आई गिव यू टू सिचुएशंस. अभी वाला जो केस दिया मैंने, आपको मैंने बोला ओके आप 73(5) सिलेक्ट कर सकते हैं और आप DRC 03 के थ्रू जा सकते हैं. Right? Now my issue is whether you will be paying interest on the same, yes or no? Net and late filing, absolutely correct, Indranil ji. I am coming to it. Friends, yes, you are saying yes. Kyun? The proviso has 3 parts which has been inserted in section 50 subsection 1. What it says? First, yes, you are allowed to pay on net if the return for that period is late and the outward supply for that period is shown in same return. Example, November का return 20th December तक जाना है, and if you file it on 25th of December on the Christmas day, so 5 days का जो interest लगेगा वो net पर लगेगा. But आपने नवंबर का liability miss कर दिया and you are going to show it in the December month, और आप जब उसको 1 मंथ बाद पे करेंगे, आपको जो इंटरेस्ट है वो ग्रॉस पे ही लगेगा. एग्जाम्पल, 1 लाख की लायबिलिटी थी, 80,000 का इंटरेस्ट था, ITC था. इन दिस केस जहां रिटर्न लेट हुई है, इट विल बी पेड ऑन 20,000 रुपीज इंटरेस्ट. लेकिन जहां आपने एक पीरियड की लायबिलिटी दूसरे पीरियड में दिखाई है, it will be paid on gross basis, that is 1 lakh rupees. 1 lakh rupees. Right? Now, if thirdly, if the person has been issued the notice under 73 or 74, even then the interest is payable on gross basis. So please keep all these points in mind. Moving ahead, क्या क्या इकट्ठा करना है? Whenever you have lots of tasks in hand, always get a bunch ready for the same, so that at least preliminary documents to पूरे हो जाए. I always keep in my bunch all these things. Audited financial statements का copy. अगर branches है तो branch wise financial statements भी पहले ले लीजिएगा, क्योंकि online आपको consolidated मिलती है. 26 AS and income tax return, don't miss. Lots of service tax notices are coming on the basis of third party information. That is the copy of your 26 AS or ITR returns. So it is a time when all the laws should be consolidated. Moving ahead, books, सर लेजर भी चेक करने हैं, सब कुछ चेक करना है, क्योंकि आज आप गलती पकड़ लेंगे तो इंटरेस्ट स्मॉलर है. अगर डिपार्टमेंट उसको असेसमेंट के टाइम पे पकड़ेगा, द लायबिलिटीज ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विल अक्रू. सो कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स, ऑल लॉस टू बी कंसिडर्ड कि कहीं कोई और इनकम्स तो नहीं दिखाई है. यूजर आईडी पासवर्ड इफ इट इज नॉट योर रेगुलर क्लाइंट. एंड यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल की रिटर्न का पार्ट 5. Don't forget it. It is one of the important ones. और जब मैं अभी आपसे फॉर्म डिस्कस करूंगी, then I will show you. 3B की एनुअल समरी, GSTR 1,
and your copy of electronic credit and cash ledger. So एक bunch पहले ही तैयार करा लेना कि ये सारी चीजें होनी चाहिए जब हम detailed webinar करते हैं. So I discuss these points at length, but here I am giving you 20. Sir, जब हम income tax का audit करते हैं ना, so we always get a checklist in our hand. कि अच्छा वो जो नया आर्टिकल भी ज्वाइन करते हैं ना, उसको हम रेड, ग्रीन, ब्लू सारे पेन देके भेजते हैं और बोलते हैं तुम्हें वाउचर टिकिंग करनी है. व्हाट अबाउट जीएसटी? अब ऑडिट नहीं है, बट अल्टीमेटली क्लाइंट को रिप्रेजेंट हम करते हैं. सो वी मस्ट फाइंड आउट जीएसटी इज अ ग्रोइंग, डेवलपिंग लॉ वेयर योर own opinion changes every time. The more and more you will read, वैसे तो it is with all the laws, but GST because it's a developing law, आप भी अपना देखेंगे. साल पहले जिस चीज को आप शायद टैक्सेबल मानते थे, आज आप उसको बोलते हो ये नॉट टैक्सेबल है. क्यों? ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रहा है, केसेस आ रहे हैं. सो प्लीज एक जो आपने 3BB भरी है, प्लीज रीचेक इट, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटेंट से आती है. हो सकता है कमीशन आपको दिखाई ना गई हो सकता है डेटर से आने वाला इंटरेस्ट उसने सिर्फ इंटरेस्ट सोच के छोड़ दिया हो. So please consider all those points. Okay, now if I ask you all one question, small question on this topic, RCM. Please check foreign payments, income and expenditure as per P&L, GST return should match. Abhi I will give you one Excel sheet also. Friends, हर एक का एक way होता है work करने का. I believe कि अगर मुझे scattered data मिलता है तो I'm not able to work. If I get an Excel sheet, I get an overview of the thing. कि ठीक है, ये इसमें अच्छा 3B1 में फर्क है, बुक्स में डिफरेंस है, कौन कौन से अकाउंट पे डिफरेंस है. So you get an idea. So I will share that Excel sheet with you also. HSN SAC correctly used. Classification has been a very disputable issue. Recheck that. Your ITC कोई negative list का ITC ना हो. अभी आज when I was sitting in the department, the person said किसी ने file refund की लगाई थी, but उल्टा there was a demand from that person's side. Friends, rule 86 भी follow नहीं किया था. प्लीज चेक दिस पॉइंट्स. अगर उनकी वजह से कोई डिमांड निकलती है, रिफंड क्लेम किए हैं, वो करेक्टली क्लेम किए हैं या नहीं किए हैं. देन एडवांसेस ऑफ अनएडजस्टेड एडवांसेस ऑफ सर्विसेज एडजस्ट किए हैं या नहीं किया, एसेट का सेल एडजस्ट किया है कि नहीं किया, एक्सपोर्ट जिसको वो क्लेम कर रहे हैं वो करेक्टली एक्सपोर्ट है कि नहीं. अच्छा, आरसीएम, डायरेक्टर का पेमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स एज गिवन इन द नोटिफिकेशन 9/17 वो कंप्लाई फॉर की है या नहीं की है. ऑल दीज पॉइंट्स नीड्स टू बी चेक. इफ आई आस्क यू, बिकॉज आरसीएम की बात हुई है, चलिए अगर मैं नॉर्मली पूछूं, आपके पास एक पर्सन आया रजिस्ट्रेशन कराने, टर्नओवर, पर्सन का नाम है आर और एक है आर एंड कंपनी. Four cases I am giving you, and when you will give me the reply, you will say case number 1, 2, 3 and 4. GTA सर्विस ली, इसका टर्नओवर भी 15 lakhs है, इसका टर्नओवर भी 15 lakhs है. The turnover in both the cases is 15 lakhs. GTA and advocate service. My question to you is कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. विच क्लाइंट को आप बोलोगे कि आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है और किस केस में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की जरूरत है? केस नंबर 1, 2, 3, 4, किस केस में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है? और चलिए 4 केस हैं, 4 केसेस. केस नंबर जीटीए लिया है सिर्फ 15,000 का, और इसमें जीटीए, इसमें एडवोकेट सर्विस भी 15,000. नाउ टेल मी क्विकली. नो आंसर्स इन द चैट बॉक्स येट. quickly because I have to move forward. Meanwhile, I just let you know you are replying to this. I just want to tell you 4. Since you have mentioned table, I would like to ask which table we should follow 2020. I am coming to it. Don't worry, I'm coming to it. One shot में I will give you the answer. I could not see your name because the messages are really flowing up. All right, friends, चारों आप लोगों ने मुझे आंसर दिया 4 के 4 केसेस में, and my answer is no, yes and no.
So my answer is merely one case. Lalita ji, I will come to your answer shortly. Only one case. How come? आप लोगों ने जिन्होंने भी मुझे 4 आंसर्स दिए कि चारों केसेस में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, दे डिड इट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अगर आपने कोई भी सर्विसेज ली हैं व्हिच आर लायबल फॉर रिवर्स चार्ज. Am I right? Am I right? I need the answers from those who have said me 4 cases and others also, right? But if you would have checked the notification 12/17, serial number 21A and 45, sir, what it says, GTA providing services to a non-registered individual whose threshold, जो threshold को cross नहीं किया है, the transaction is exempt. When this transaction is exempt, it will not be liable for RCM. पहले exemption check होता है, फिर RCM check होता है. It will not be liable for RCM. Hence, no need to get registered. Because what my words were, to an individual who is not registered or who has not crossed the threshold limit. Whereas in case number 3, it is R and company. So because it is not covered by exemption, section 24 will come into picture. Registration lena padega. Case number 2, again, this falls under serial number 45. Serial number 45. Any firm of any advocate providing services. Mukesh ji, I do so. Give me a while. मुकेश जी, अभी तक मैंने यही बोला. आप लोगों ने जिन्होंने मुझे बोला चारों केसेस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, उन्होंने सेक्शन 24 पिक किया था. सेक्शन 24 कहते हैं कि आपको चारों केसेस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है. लेकिन अगर एक ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट हो जाती है तो उसके ऊपर आरसीएम लगता ही नहीं है. सो वो ट्रांजैक्शन कहाँ एग्जेम्प्ट हो गई? एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन सर्विसेज की 12/17 है. अगर आप उसका सीरियल नंबर 21A और 45 चेक करेंगे, सो ट्रांजैक्शन ऑफ अ जीटीए विद अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल इज एग्जेम्प्ट. क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए. लेकिन ओनली इंडिविजुअल, आर एंड कंपनी एक पार्टनरशिप, एज अ रिजल्ट एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा. सो इसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. लाइकवाइज एडवोकेट से जब सर्विसेज आती हैं, अगर वो अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को देता है, ट्रांजैक्शन इज एग्जेम्प्ट. क्योंकि ये सीरियल नंबर 45 में एग्जेम्प्ट है, इन दोनों में ही मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए. सो हम सिर्फ सेक्शन 24 ना देखें, एग्जेम्पशंस भी साथ में देखें, एंड ओवरऑल अकॉर्डिंगली वी शुड एडवाइज द क्लाइंट. When you are filing GSTR, sir, GSTR 99C is not a form. It is the entire checking of your year. Expenses किए हैं बिहाफ पर, जो मतलब रिकवरी की है, ऑल दोस. अब सीए ही ले लीजिए, सीए ने ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस रीएम्बर्स कराए हैं, दैट इज आल्सो लायबल टू जीएसटी. नीचे इंश्योरेंस लगता है, फ्रेट लगता है, ऑल्दो फ्रेट के लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल है, इंश्योरेंस के चार्जेस नीचे लगते हैं. प्लीज मेक श्योर ऑल दोज आर मेड पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन इटसेल्फ. अच्छा, जब भी अब उन्होंने आपसे फिगर सेपरेट मांगी है कि जो आरसीएम अनरजिस्टर्ड पर्सन से आ रहा है, यूआरपी से, हमें सेपरेट दीजिए. हैव यू एवर चेक्ड दैट जो आरसीएम यूआरपी से आ रहा है, आपके क्लाइंट ने उस पे सेल्फ इनवॉइसिंग की हो? द आंसर इज नो. Many of the cases have been found where RCM is payable on the transaction with URP, but no self invoicing has been generated. अगर RCM की transaction रजिस्टर्ड पर्सन से है तो सामने वाला इनवॉइस देगा, चाहे आपने आरसीएम पे करना है. लाइक एडवोकेट नंबर 2 जो रजिस्टर्ड था. लेकिन अगर आप एडवोकेट नंबर 1 से डील कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपकी पार्टी को सेल्फ इनवॉइसिंग करनी थी, whether it is getting done or not. Are the document, sir, जब डिपार्टमेंट ऑडिट कर रहा है ना, तो वो आपसे पहले वाउचर्स मंगवाता है, और अगर उसके ऊपर नेसेसरी जो उसके कंटेंट्स हैं वो नहीं होते हैं, सो दैट क्रिएट्स ट्रबल. और अगर आपके परचेज वाले पे नेसेसरी कंटेंट्स नहीं है, तो इवन द आईटीसी कैन बी अ रिस्की अफेयर.
ब्रांच ट्रांसफर्स। अब जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न बनाते हैं ना, तो हम ब्रांच ट्रांसफर्स को क्या करते हैं, नेट ऑफ कर देते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट दोज आर शेड्यूल 1 सप्लाईज एज पर जीएसटी। फिक्स्ड एसेट्स का सेल ऑलरेडी, 2A 2B रिकैंसिलेशंस, अब तो 2B मैंडेटरी हो चुका, और ये एक ऐसा ईयर था जिसमें जनवरी से जो 2B था वो मैंडेटरी हो गया था। सो ऑल्दो अभी तक फॉर्म 2A को ही रेफर कर रहा है फॉर द ईयर 21-22, राइट। रूल 42-43 की वर्किंग्स जरूर चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब मैं डायरेक्टली कुछ केस स्टडीज पे मूव कर रही हूँ, राइट। इसमें दिस पीपीटी कंटेन्स एवरीथिंग एंड आई विल शेयर द डिटेल्ड पीपीटी ओनली विद यू, बट नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट। आप सबने, चलिए एक फटाफट से पहले ना केस स्टडी करते हैं एंड देन आई कम टू दिस पॉइंट। जिन्होंने मुझे आंसर दिया था 3B GSTR 1 और बुक्स, सर as per GSTR 1 and 3B, for my considered view, GSTR 3B prevails over GSTR 1. Although in the instruction of the form they have referred GSTR 1. अरे वो क्यों GSTR 1 रेफर करते हैं? B2B B2C का बाइफिकेशन ही GSTR 1 से मिलता है. Various other information is easily available from GSTR 1 only. However, GSTR 3B is more a reliable document. Let's have a look on the few case studies here. अगर आप ये देखें, ये देखो कितनी आइडियल सिचुएशन है, राइट। अगर आइडियल सिचुएशन है 15,000, 15,000, 15,000, तीनों 15,000 है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हमने टेबल तो डिस्कस नहीं किए, चलो पहले क्विकली हम टेबल डिस्कस कर लेते हैं, देन आई कम टू इट एंड स्पिल ओवर इफेक्ट्स। फ्रेंड्स, आपसे भी पूछूं ना कि आप GSTR 9 कैसे ड्राफ्ट करेंगे, या आपको क्लाइंट की क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, आप बोलोगे मुझे 3 चीजें बता दो। क्या? मुझे आउटपुट बता दो, मुझे इनपुट बता दो, और कितना टैक्स पे किया ये बता दो। एम आई राइट? आउटपुट कितनी है, कितना इनपुट है, कितना टैक्स पेबल बनता था और कितना पेड है। लाइकवाइज द फॉर्म इज ड्राफ्टेड। लाइकवाइज हैव अ लुक, हियर इज द फॉर्म। देखिए, ये डिटेल्स छोड़ दीजिए टैक्स पेयर की। This is outward, this is input, and this is the tax paid. इसका मतलब our form is limited to these 3 tables and parts only. Then why this part 5? I will come to it. सर, पार्ट 2 में आउटपुट है, पार्ट 3 में इनपुट है, पार्ट 4 में टैक्स पेबल और पेड का इंफॉर्मेशन है, जो आपने मुझे बोला था कि हमें 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन ये तीनों पार्ट्स इंफॉर्मेशन मांगते हैं सिर्फ मार्च 2022 की रिटर्न्स तक। दैट्स इट। इसका मतलब जो रिटर्न्स ऑफ अप्रैल 21 से मार्च 22 की होंगी, वो रिटर्न्स में जितना डाटा गया है, उसका आउटपुट, उसका इनपुट, उसका पेबल, उसका टैक्स पेड इस पार्ट में जाएगा। Whereas GST allows you another 6 months of the next year to rectify your mistakes. Am I right? देता है ना, अगले साल अप्रैल से सितंबर तक करेक्शन कर लेना। अप्रैल से सितंबर 22 तक आपने जो करेक्शन की है आउटपुट में, इनपुट में और पेड टैक्सेस में, दैट ऑल। हाँ, ललिता जी बोल रहे हैं, वर्षा जी बहुत लंबा क्वेश्चन था, आई कुड नॉट रीड बिकॉज वी आर रियली शॉर्ट ऑफ टाइम। ललिता जी, अब 30 नवंबर 2022 हो गया है, बट यहाँ पे अभी भी यही पीरियड मेंशन्ड है। आपने जो एडजस्टमेंट अप्रैल से सितंबर तक की है, ऑल्दो थ्रू द नोटिफिकेशन दे हैव एक्सटेंडेड दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑल्सो, राइट, क्योंकि ये पिछले बजट में आया था और वो बजट के प्रोविजंस इंप्लीमेंट हो चुके हैं। सो आपको जो नेक्स्ट साल का जो टाइम मिलता है, नेक्स्ट 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली 7-8 मंथ्स जो मिलते हैं आपको, उसमें जो एडजस्टमेंट्स की गई हैं वो सेपरेटली बतानी है। पहले 2 टेबल आउटपुट, नेक्स्ट 2 टेबल इनपुट, और लास्ट कॉलम, लास्ट टेबल टैक्स पेड और पेबल। लाइकवाइज वो जो पार्ट 2, 3, 4 थे वही टेबल 10, 11, 12, 13, 13। अब ध्यान रखना,
table 1011 output, this is input, and this is tax paid and payable. Now friends, what is important? इसका मतलब जो मार्च 22 तक की रिटर्न का डेटा होगा वो टेबल 4 में जाएगा, और जो अगले साल जो आपने करेक्शन कर दी है वो पार्ट 5 में जाएगी। Am I right? लेकिन अब मुझे बताइए जो करेक्शन आज तक की ही नहीं है, एग्जाम्पल जो अभी अभी क्लाइंट आपके पास आया था जिसके लिए आप DRC 03 भरवा रहे थे, वो कहां शो करेंगे? Where will you show that? Where will you show that? Quick answer. Part 2 or part 5? Part 2 or part 5? In table 4 to 9 only. Absolutely correct. It means that has to be shown. इसका मतलब कि मुझे स्टार्टिंग के टेबल्स पे जो मेरे स्टार्टिंग टिल टेबल नंबर 9 है उसमें डाटा कौन सा जाएगा? जो 3B में गया प्लस additional as per books which is not reported anywhere, जिसका आपको DRC 03 भरना है वो भी इसी पार्ट में जाएगा। सिर्फ जो अगले साल करेक्शंस की हैं that will go to part 5. Now friends, here are the case studies on the same, लेकिन उसमें से मैं जो केस स्टडी पिक कर रही हूं that is this one. देखिए जब तो सारा डेटा करेक्ट है तो सब कुछ टेबल 4 में जाएगा, लेकिन अगर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन अगले साल करेक्ट की है, अरे भाई जो अगले साल करेक्ट किया, ऊपर हेडिंग देखिएगा ईयर्स का, अगले साल करेक्ट किया, ये 5000 कहां जाएगा? पार्ट 5 में, और ये 10,000 कहां जाएगा? टेबल नंबर 4 में, राइट? थर्ड केस, ये जो कभी करेक्शन की ही नहीं, क्विकली आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज, जो कभी करेक्शन की ही नहीं, दैट विल ऑल्सो गो टू टेबल नंबर 4, और ये जो 5000 आपने कभी नहीं दिखाया उसके लिए आपको DRC 03 भरना होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ मूविंग अहेड, जिन्होंने मुझे कहा था हम 3B और GSTR 1 सब मिला के भरेंगे, फॉर दैट फ्रेंड्स 3B prevails over GSTR 1 and case study number 5 is the best example of this thing. Books में 15,000, 3B में 15,000, 1 में 10,000, लेकिन 1 करेक्ट की अगले साल। अब मुझे बताइए कितना जाएगा टेबल 4 में और कितना जाएगा पार्ट नंबर 5 में? आपने 3B करेक्ट फाइल की है और उसी साल में फाइल की है, सो एंटायर अमाउंट विल गो टू टेबल नंबर 4. इट शोज दैट जहां टैक्स पे हो रहा है, GSTR 1 में टैक्स पे नहीं होता है, दैट इज इंफॉर्मेशनल पर्पस, सो द एंटायर अमाउंट विल फ्लो फ्रॉम 3B. Whereas case number 6 is a reverse, 3B में बाद में करेक्शन की है, सो टेबल नंबर 4 में आएगा 10,000 और जो 5,000 अगले साल किया है वो टेबल नंबर 10 में जाएगा. सो दिस वाज द केस. नाउ एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था और जो सबसे वैलिड क्वेश्चन है, लेट मी आंसर दैट एंड विच इज द क्रक्स. मैंने आपको कहा था पिछले साल की रिटर्न जरूर पकड़ के चल, उसका पार्ट 5. क्यों सर? GSTR 3B एक खिचड़ी है. जब 3B में हमें ये पता नहीं लग सकता कि मैंने पिछले साल की कितनी एडजस्टमेंट इस साल की है. और फ्रेंड्स, जो हमारा टेबल 6A है और जो टेबल 9 है, लेट मी शो यू, ये टेबल 9, इसका जो ग्रे कॉलम है पेबल, ये तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो इसका ऑरेंज कॉलम है पेड की डिटेल चेंज नहीं होती. सो एक मेरा कॉलम 6 से इनपुट टैक्स क्रेडिट और एक मेरा ये ऑरेंज पार्ट, दिस कैन नॉट बी चेंज. नाउ बिकॉज दिस कैन नॉट बी चेंज और ये 3B से डेटा पिक करते हैं, इसमें पिछले साल का डेटा ऐड होकर आ जाता है. अब क्योंकि इसमें पिछले साल का डेटा ऐड होकर आ जाता है, हमें उसको सेपरेट करना है. अब वो सेपरेट कैसे करेंगे? मैं छोटा सा शॉर्टकट बताती हूँ. आउटपुट का लास्ट ईयर का डिफरेंस हमेशा आपके टेबल 9 के पेबल माइनस पेड में होगा.
चेक करके देख लेना. दिस इज हाउ आई चेक माय रिटर्न्स. आउटपुट का इफेक्ट. क्यों सर? जो आपने टेबल 9 में पेबल दिखाना है वो आपने लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 21-22 की दिखानी है. लेकिन जब वो पेड उठाएगा तो आपने अगर पिछले साल का भी कुछ इस साल पे किया है वो ऐड करके ले जाएगा. अब ये जो मैं बोल रही हूं ना, इसकी पूरी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रही हूं इन अनदर स्लाइड. जस्ट अ व्हाइल. पेबल और पेड ऑफ टेबल 9 का जो डिफरेंस होगा दैट विल कम इन योर टेबल 9. वो पिछले साल का इफेक्ट देगा. और जो इनपुट का डिफरेंस होता है, जो पिछले साल की गलतियां यानी 20-21 की आपने अप्रैल से सितंबर 22 तक ठीक की थी, 21 तक ठीक की थी, वो जो इनपुट का इंपैक्ट है वो हमें इनपुट के कॉलम 6J में दिखता है. The module says, the firm says, ideally the 6J column should be 0. Yes, it should be 0. क्यों? क्योंकि टेबल 6 में बाइफिकेशन है, 3B में कितना इनपुट लिया और उसका ही नीचे बाइफिकेशन लीजिए. आइडियली इट शुड बी 0. लेकिन ये जो 6J कॉलम है इसमें अब सोचिए, आपने इनपुट भी दिखा दूं, अभी दिखाती हूँ. आपका एक्चुअल इस साल का इनपुट था 100, आपने ले लिया 102. क्यों? 2 पिछले साल का लिया. तो जब आप ऊपर वो जब इंपोर्ट करेगा उसको तो कुछ नहीं पता, वो तो 102 ही उठाएगा. आप बोलोगे इस साल का इनपुट तो 100 है, तो जो 2 डिफरेंस है पिछले साल का वो कॉलम नंबर 6J में आएगा. सो आउटपुट का डिफरेंस पेबल और पेड में और इनपुट का डिफरेंस 6J में. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज स्पिल ओवर इफेक्ट्स. Spillover effects. Have a look on the next slide of spillover effects, and then I will show you Excel sheet. Sir, I hope I can take this session for another 5 to 7 minutes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right, sir. Thank you. Sir, GSTR 9 is a reconciliation. जैसे BRS बनाते हो. ये आपके सामने एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में, स्लाइड में मैंने पूरा spillover effects एक्सप्लेन किया हुआ है. Have a look. Freezed figures. फ्रीज्ड फिगर्स. आपको जो 3B मिलनी है ना वो ऑलरेडी फाइल्ड है. आपको 3B में दिखा. अभी हम आउटपुट की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स. आउटपुट की 1,03,000. अच्छा, साल का आउटपुट 1,03,000 था. टैक्स पिछले साल का टेबल 10 5,000. यानी पिछले साल की जो एडजस्टमेंट इस साल की है टेबल 10 में, अरे वो तो दिखेगी ना. आप पिछले साल का पार्ट 5 उठाइए, उसमें 5,000 दिखाया है कि मैंने अगले साल सेल बढ़ाई थी और 2,000 अगले साल कम की थी. सो नेट इफेक्ट इज 3,000. इसका मतलब 21-22 का 1,00,000 है जो आप 3B में दिखा चुके हो, और 20-21 का 3,000 पिछले साल का इंपैक्ट है. यहां तो बहुत आसानी से पता चल गया. अब यही चीज जो आसानी से दैट वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द Excel sheet that I will show you in a while. अब देखिए हुआ क्या. जब आप GSTR 9 भरने लगे, फ्रेंड्स, दिस हेडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दीज हेडिंग्स क्यों? हो सकता है आपको 21-22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लायबिलिटी 1,00,000 ही मिले एज पर ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और एक्चुअल लायबिलिटी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6 इज 1,00,000. जहां तो 1,00,000 मिल गई, कोई दिक्कत ही नहीं. सारा का सारा टेबल 4 में, जो टेबल 4 में आता है वही टेबल 9 में आता है. उस साल की लायबिलिटी, अरे उस साल की लायबिलिटी तो 1,00,000 थी. नाउ कुछ अगले साल हमने कुछ करेक्शन ही नहीं की, DRC हमको भरना ही नहीं है, सब कुछ 0. सेकेंड, अब जब आपने ऑडिटेड बुक्स उठाई तो उसमें लायबिलिटी 1,08,000 निकली दोनों केसेस में. देखो, लेकिन एक में आपने ठीक कर दी और एक में आपने ठीक नहीं की. फ्रेंड्स, जिसमें आपने अगले साल ठीक कर दिया 8,000, उसको तो पार्ट 5 में ले जाओगे. अभी आपने ही बोला था जो अगले साल ठीक किया वो पार्ट 5 में जाएगा टेबल 10 में. यानी अगला साल यानी अप्रैल से नवंबर 22 तक, और 1,00,000 यहाँ दोनों को जोड़ दीजिए. देखिए, बुक से 1,08,000 मैच करेगा. और मैंने क्या कहा था, पेबल और पेड का डिफरेंस पिछले साल का होगा. देखो, 3,000 पिछले साल का इंपैक्ट था ना, 1,00,000 इस साल का पेबल, 3,000. ये चेक होगा पेबल और पेड का डिफरेंस लास्ट ईयर का.
लेकिन जिसमें आपने ठीक ही नहीं किया, तो फ्रेंड्स इस बार का डिफरेंस 8,000 जिसका डीआरसी भरना है, माइनस पिछले साल का डिफरेंस 3,000, पिछले साल का एक्सेस इधर आया ना, नेट डिफरेंस 5,000 पेबल और पेड, क्योंकि जो आपने कभी पे नहीं किया और जो आपने 3B में दिखाया पूरा 1,00,000 प्लस 8,000, 1,08,000 की लायबिलिटी इसी कॉलम में आएगी। लाइकवाइज जब आपने बुक्स खोली और आपको लायबिलिटी मिली 92,000, अगेन दो चीजें हो सकती हैं, अगले साल ठीक कर दिया, अगले साल ठीक नहीं किया। अगले साल ठीक कर दिया तो टेबल नंबर 11 यूज कर लेंगे। पेबल और पेड का डिफरेंस पिछले साल का, देखो सारी जगह शो कर रहा है, यहां भी कर रहा था, 5,000 आया था ना, 8 - 3 सारी जगह शो कर रहा है। लेकिन अगर आपने करेक्ट नहीं किया, इस साल का डिफरेंस 8, पिछले साल का डिफरेंस 3, टोटल 11। सर इस केस में आपका रिफंड बनता है, अगर 2 साल एक्सपायर अभी तो हुए नहीं है, अगर आपको लगता है आपने एक्सेस टैक्स पे कर दिया और उसको एडजस्ट भी नहीं किया है, सो यू कैन टेक द रिफंड फॉर द सेम। बट व्हेन आई वाज ड्राफ्टिंग इट, सो एब्सोल्युटली माय स्टाफ सेड टू मी, मैम हमें ये सारे केस इकट्ठे मिलते हैं। इकट्ठे मतलब कोई हमने कम दिखा दिया, कोई हमने ज्यादा दिखा दिया, कोई हमने दिखाया ही नहीं है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल केसेस। अब जब आपने बुक्स खोली, अब देखना जरा ध्यान से, उसमें लायबिलिटी दिखी 1,10,000। हमने बोला अब ये क्या है, बोलते देखो आपने 3B में तो 1,00,000 ही दिखाया हुआ है, 7,000 और 3,000 आपने अगले साल में ठीक किया है। मैंने कहा ओके, जो पहले अगले साल में किया उसको तो टेबल नंबर 10 और 11 में ले जाओ, नेट इंपैक्ट 4,000। ओके, ये तो इस साल के पार्ट 5 में जाएगा। 6,000 तो कहीं शो ही नहीं किया। अरे ये वही कमीशन है जिसपे पार्टी ने टैक्स नहीं दिया है, तो जो कहीं शो नहीं किया और जो 3B में दिखाया 1,00,000 प्लस 6,000, 1,06,000 टेबल नंबर 4 में, और इस 6,000 के लिए डीआरसी भी भरना पड़ेगा। हो गई टर्नओवर पूरी, 1,06,000 टेबल नंबर 4 में, और जो अगले साल ठीक किया 4,000, नेट 1,10,000 बुक से टैली कर जाएगा, एक्चुअल टर्नओवर जो टैली कर जाएगी। So this is how we should frame it. Let me share the Excel sheet also here. Here it is. I hope you all can see this, although a little smaller. Let me zoom it a bit. Here, no, पहले zoom नहीं करेंगे. Friends, this is the part of sales. This is the part of purchase. This is the part of sale and this is the part of purchase. Sale में हमें 3 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं. Is this visible? Yes, ma'am, visible. All Yes, right, ma'am. all right. Friends, सेल में हमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. Now let me show you the sale. 3B, 1 और बुक्स उसी साल की मिल जाती है, GSTR 1 भी उसी साल की मिल जाती है, 3B खिचड़ी होती है. 3B में से पिछले साल का टेबल 10 और 11 उल्टा कर दीजिए. इस शीट में पूरे एक्सेल फॉर्मूले लगे हुए हैं, ज्यादा एक्सेल मुझे भी नहीं आती, जितनी मेरी समझ से आती है उतने लगे हुए हैं. सो सब्ट्रैक्ट पिछले साल का माइनस कर दो, इस बार पिछले साल का 10 माइनस कर दो और पिछले साल का 11 ऐड बैक कर दो. जैसे ही आप सिर्फ यहाँ पे पिछला GSTR 9 देके फिगर डालेंगे, वो 3 से इफेक्ट साइड पे कर देगा पिछले साल की. अब आपकी ये 3 की फिगर कंपेरेबल हो जाएगी विद योर GSTR 1 एंड बुक्स. अब जो आपको ये डिफरेंस देगा, यहां सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बुक्स विद 3B. क्यों? जो आपका एडजस्टमेंट होना था और आपने उसके बाद टैक्स ही नहीं दिया है. ये जब आप चेक करेंगे, आप बोलेंगे इसमें से कुछ एडजस्टमेंट मैं अगले साल कर चुका हूं अपने मार्च 22 के बाद, और जो अभी भी रह गई है वो DRC 03 पे होगा. सो ये आपको आउटपुट का भी ऐसे ही बताएगा. और परचेज में 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, 3B, 2A और बुक्स. 2A, of course, I never consider 2A का consolidated figure as of any relevance, but it will give you an idea कि मेरा 2B में कितना 2A या 2B में कितना कम आ रहा है. इसमें भी 3B में खिचड़ी होती है. प्रीवियस ईयर के लिए टेबल 12 और 13 यूज करेंगे, उनको उल्टे कर देंगे
सर सिर्फ फिगर्स डालनी है। अब ये 3 भी आपकी कंपेरेबल हो जाएगी और आपको सारा आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस कॉलम से क्या उठाना है। व्हेन आई डू सो, आई ऑलवेज रेफर टू द बैलेंस मैचिंग ऑल्सो। ओपनिंग बैलेंस मैच करिए, क्लोजिंग बैलेंस मैच करिए। इट इज अगेन एन एडिशनल चेक कि आपको कौन सी फिगर जो है वो कहां पर आपने टोटल कितना आपका जो डिफरेंस है वो आ रहा है और उसी का बाइफिकेशन या आउटपुट में या इनपुट में दिखना चाहिए। सो दिस एक्सेल शीट इज अ चेक ओवर इट एंड लाइकवाइज जैसे मैंने अभी आपके साथ आउटपुट शेयर किया था, मैंने सेम वे से इनपुट की भी शीट बनाई हुई है, कौन से कॉलम में जाएगा। और देखिए 6J में 2000 लास्ट ईयर का डिफरेंस आ रहा है। मैंने बोला था इनपुट का डिफरेंस इसमें आएगा। फ्रेंड्स, इन दिस आई हैव गिवन द 9C ऑल्सो। कैसे वही कंटिन्यू करते हुए क्या क्या इम्पैक्ट हमें दिखाने हैं। अब हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है सजेशंस देने की, बट स्टिल आई हैव केप्ट द सजेशंस बिकॉज कि कई पॉइंट्स हम इसके बेसिस पर चेक कर सकते हैं कि हमने वो कंसिडर किए हैं या नहीं किए हैं। सम टेक्निकल ग्लिचेस वी फेस, अ फ्यू सॉल्यूशंस फॉर द सेम, and with this I end up my deliberation and over to you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for a very detailed deliberation. I would request you to please stay back so that at the end we can have some question answer session if possible. Right, sure. I will try my level best to be there. Thank you. And in case if any answer is left, so that can be asked me personally also. Okay, thank you. So we'll take it up with Vivek ji, our second Sir, speaker. if you just permit ma'am. me, एक छोटा सा इशू ये था कि बहुत हाँ, लोगों ma'am, को बोलिए। 8A और 8B में प्रॉब्लम है। सर लिटरली वो हट चुकी है ऑप्शन कि आप PDF अटैच कर सकते हैं in the with the GSTR 9C, but still if you are filing 9C also and there is any difference between 8A, so you can put it there. एक सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी है फॉर्म में वो है 8A में वो ग्रॉस क्रेडिट उठाता, नेट क्रेडिट उठाता है और जो रिवर्सल्स है उसके इम्पैक्ट टेबल 8 में नहीं लेता है। दैट इज द फॉर्म एरर एंड फॉर दैट अगर आप 9C फाइल कर रहे हैं यू कैन अटैच अ नोट फॉर द सेम ओवर देयर, क्योंकि वो 7 के रिवर्सल्स को कंसिडर नहीं करता, GSTR 2A से मैच करता। Thank you so much, and I can see Vivek ji has also joined. So I take the lead. Thank you so much. Thanks to all the participants for their. Thank you so much, ma'am. President sir, if you would like to say something. No, we can start. Thank you, Aanchal, for a very wonderful deliberation as always. As the time was short, we cannot have can see your presentation, entire presentation actually. So I think it would have taken at least 3 hours. Anyway, thank you very much because Vivek has already joined and Shyam, you can already provide. Yes, I'll just introduce our next speaker of the day, Vivek Jalan bhaiya. So Vivek bhaiya is a chartered accountant and a qualified LLM LLB. He is the chairman of the Fiscal Affairs and Taxation Committee of the Bengal Chamber of Commerce and Industry. He is the chairperson of the CII Core Group Indirect Tax. In these capacities, he has made various representations before the Honorable Minister of Finance in Centre and States, as well as CBDT, CBIC, state commissioners on various issues faced by taxpayers. He is also a regular columnist and a guest expert in Economic Times, Times of India, Money Control, and various other magazines. He is also a guest speaker on taxation matters on India TV, ABP, All India Radio, and other media platforms. He is also visiting faculty for taxes in CII, ICI, SI, IAFT, and other chambers. He has worked as a finance manager in ITC Limited and chief compliance officer with Intrasoft Technologies Limited. And he has authored quite a number of books on GST. He is also a regular speaker on various professional forums on indirect and direct taxes. So I welcome Vivek bhaiya with a small flower bouquet to DTPA. As this is virtual, we request you to accept this, and so that we can meet next on physical mode and give you personally. Thank you. Thanks a lot. And namaskar to all the participants.
Sham, we can send it physically also. Yes, we'll send it physically to you. Please make it sure. It is a very innovative concept, sir, but we will replicate this in our chamber, actually. So, thank you, DS sir and DTPA for giving me this opportunity to present on the recent amendment and certain issues on GST. To the esteemed and august gathering out here, I see quite a overwhelming response, and rightly so, because of the powerful session taken by Ms. Kapoor before this on GSTR 9 and 9C, which is such an important aspect of GST books. GST closing books have already been closed, and I hope post this powerful session I will be able to do justice. Friends, okay, I'll share my PPT first. Is my PPT visible? Yes, yes, it's visible. Yeah. So, friends, burning, actually this topic, burning issues, this was from my earlier presentation. There was a presentation before this in the CII. So it is actually recent amendments. Don't worry. I will stick to that recent amendment and certain issues. But friends, before starting on what has been the amendments, I would like to take 10 minutes on what would be the going forward amendments under GST. Before this seminar, we had another webinar with on GST in one of the chambers. So, Honorable Member Policy of CBIC was there, and she has made a very, very detailed, speech on various issues under GST. And what is expected under GST? So I would just take 5-10 minutes going forward. What would be the expectations? What you can expect under GST? We all say as chartered accountants that बहुत ज़्यादा changes है and काफी सारे compliances है. Friends, let me tell you, the compliances, if at all, may be going to increase going forward. Okay, so the draft GSTR 3B that is already out for public comments, and the honorable member CBIC, she has requested all the stakeholders to provide their comments on the draft GSTR 3B, and I'm sure DTPA and the DSR would have already provided their comments on the draft GSTR 3B. Now the purpose behind the new GSTR 3B, maybe very soon it will see light of day, is to gather more information. Okay, so ministry is very, very clear कि GST में जी हमें और minutely dig करना है. आप सभी को पता है एक नया फॉर्म आने वाला था GSTR 1, 2, 3 सारे को मर्ज करके RET 1 वगैरह, but that has not seen light of the day. तो अब मिनिस्ट्री का व्यू है कि GSTR 3B and GSTR 1 have to become more robust with more minute details so that data analytics is more robust, right? तो जितने हमें अभी notices आ रहे हैं GST से, that is most of it is data analytics, especially the enforcement notices. Well, we from various state bodies, we had put up a recommendation before the Honorable Finance Minister also over the last 1 week, and I put it up before the member CBIC also. So, Madam, just like salmon
summon ke upar, you all know, I will discuss also, there is a instruction because summons were going on left, right and center. So we requested and recommended a similar instruction under section 67. How to invoke inspection, search and seizure. We all know that this inspection, search and seizure, this is very, very limited under income tax. For all of you would be practicing income tax also, at least some of us would be practicing. तो काफी रेयरली हमें सुनने मिलता है इंस्पेक्शन सर्च सीजर हो गया है, बट इन जीएसटी यू सी ये बड़ा ही कॉमन प्रोसेस है. ऑल्दो सीबीआईसी का एक फ्लायर है इसके ऊपर 2017 या 18 में आया था, where it is mentioned that inspection, search and seizure should be an instrument of the last resort. But the ministry is clear that they cannot tie the hands of the officers behind their back and ask them to perform. So, ye enforcement mechanism of inspection, search would continue, but there is a internal process. There is a process of who would be searched, who would be inspected, and how the search would be done or inspection would be done. लेकिन ये सब किसके ऊपर होगा? ये सब होगा डेटा एनालिटिक्स के ऊपर. एंड वो डेटा एनालिटिक्स और स्ट्रॉन्ग होगा when you give more data as a taxpayer, and that is why the process of filing GSTR 3B has undergone a massive change already with circular 170. हम वो भी डिस्कस करेंगे. और उसके बाद जो नोटिस आई हैं very recently in the state of Punjab, West Bengal and few other states, especially West Bengal, you would have seen notices कि जी आप अपना 3B ढंग से फाइल करो, right? Because circular 170, which many of the taxpayers are not still following or not able to follow, that is a mandatory circular now, and the non-compliance with circular 170 would involve implication of general penalty possibly, which can go up to 20,000 rupees per return. So in this backdrop, right, another one important thing is that Madam was saying that, and congratulations to all the chartered accountants present here, कि GSTR 3B का compliances is more than 90% today, जो कि पहले लो था 60-65% था. And remarkably, Madam was saying that रूरल एरियाज में और जो छोटे छोटे स्टेट्स है उसका कंप्लायंस बड़े स्टेट्स और या बड़े सिटीज से ज्यादा है इन GSTR 3B compliance. So the small states, the smaller cities, they are leading compliance in 3B and GSTR 1 and GST. So, but also robust compliances, friends, are the only way forward in GST. अगर compliances में कुछ भी भूल चूक हुई, हम अभी भी देख रहे हैं कि कुछ भी थोड़ा मिसिंग हुआ तो हमारे customers जो है they will deduct the GST value and not pay to your clients who are the suppliers, and it casts a huge responsibility on the chartered accountants, right? क्योंकि अगर आपने अगर कोई गलती से भी भूल हो गई, हो ही सकती है क्योंकि सारे रिटर्न हम नहीं भरते, लेकिन कुछ ऑफिस से भूल हो जाएगी, but the penalty for mistakes under GST is quite humongous, right? And therefore we have to be careful. So with this, let's go to the few important amendments very recently which have happened under GST. सबसे पहला जो थोड़ा सा अननोटिस चला गया is the amendment to Rule 36(2). Friends, many of the companies during COVID times, they have asked us a question, right? Even now they are asking us a question. Do I need to have
hard copy of the GST invoices to avail the credit? Let me tell you, friends, it is mandatory to have hard copy of the invoices under 16(2)(a) to get your input tax credit, or digitally signed invoices. Scan copy of ink signed invoices, is it an alternative? Our legal submission is no. We don't feel it is an alternative. कहने का मतलब है कि अगर आपको आपका सप्लायर एक इंक साइंड इनवॉइस का स्कैन कॉपी दे रहा है, तो वो स्कैन कॉपी क्या आप डिपार्टमेंट को दिखा के, इंक साइंड इनवॉइस का माइंड है, क्या आप वो डिपार्टमेंट को दिखा के आईटीसी एलिजिबल हो पाएगी आपकी? Well, my respectful submission is department might litigate this, right? And I am not saying something artificial. We in the erstwhile regime after GST, जब transitional credit का scrutiny हो रहा था in Andhra Pradesh, we have faced this जहाँ central excise invoices थे पार्टी के पास, and it was unsigned. बट सारा जीएसटी रिटर्न वगैरह सेंट्रल एक्साइज रिटर्न्स में सारा आ रहा था क्रेडिट, लेकिन ऑफिसर डिनाइड द आईटीसी एंड हमें इनवॉइसेस साइन करवा के लेके दिखाने पड़े. दिस इज अनदर अमेंडमेंट अंडर रूल 36(2). प्रीवियसली इवन अगर आपके सारे रूल 46 वी नो इनवॉइस जब आप बनाओगे तो डिटेल्स जो आप डालोगे वो रूल 46 में है, राइट? तो पहले था कि अगर रूल 46 में से सिर्फ वो डिटेल्स जो कि आपके जीएसटीआर 2 में जाने हैं, सिर्फ वही डिटेल्स अगर होते तो भी आपका एलिजिबल होता आईटीसी. फॉर एग्जांपल, वेदर रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल और नॉट, यस नो, ये एक रिक्वायरमेंट है रूल 46 का टू मेक एन इनवॉइस. लेकिन इवन अगर आपका इनवॉइस में ये नहीं रहता तो भी आपको क्रेडिट डिसअलाउ नहीं होता. रूल 36(2) में वो था, बट नाउ इट हैज चेंज्ड एंड रूल 46 के हिसाब से ईच एंड एवरी आइटम, ईच एंड एवरी डिस्क्लोजर, इफ इट इज नॉट देयर नाउ, देन योर आईटीसी विल बी डिसअलाउड. तो फ्रेंड्स, आप जब भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करो अपने क्लाइंट्स के लिए, प्लीज एंश्योर नाउ एटलीस्ट आफ्टर दिस अमेंडमेंट फ्रॉम अक्टूबर 2022 सारे जो रूल 46 के एक चेकलिस्ट आप बना सकते हो, रूल 46 के सारे डिस्क्लोजर्स है कि नहीं, अदरवाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हो सकता है. फ्रेंड्स, another major amendment we all know, but it is our respectful submission कि ये काफी litigation के doors खोल सकता है, is the amendment of extending the time barring period of limitation under GST till 30th of November, right? So very recently जो credit notes हैं, let us take an example, then I will go to the next few examples. And mind that काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो रिटर्न फाइल किया है, काफियों के ये क्वेश्चन है कि सर जो हमने GSTR 1 फाइल किया 11 नवंबर को, या GSTR 3 भी आपने जो फाइल किया 20 नवंबर को, अगर उसमें हमने कुछ अमेंडमेंट नहीं दिखाए रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 21-22, राइट? तो अब क्या करें? अभी भी 30 नवंबर का टाइम ड्यू है, राइट? स्टिल एज पर द CGST लॉ यू कैन स्टिल मेक द रेक्टिफिकेशन इन योर GSTR 1 or issue the credit note and disclose it for financial year 21-22 till 30th of November. Even input tax credit on financial year 21-22 invoices can be taken by you till 30th of November. But is the portal allowing you? Answer is no. The portal, once you file your 1 GSTR 1 and 3B,
it will not allow to amend your GSTR 1 or 3B of that month, right? I will give you a classic example. So as of now, you can see on your screen, section 34 has been amended. What is the amendment? For financial year 21-22, credit note related to an invoice for financial year 21-22 could be asked and could be filed in the return last for the period September 22, right? तो मतलब पहले का रूल के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिलेटेड इनवॉइसेस का क्रेडिट नोट आप टिल 30 सितंबर पास कर सकते थे और उसका इम्पैक्ट आप 11 अक्टूबर तक जो आपका GSTR 1 फाइल करना था उसमें आप ले सकते थे, राइट? अभी क्या हो गया उसका कि आप उसका इम्पैक्ट 30 नवंबर तक जो भी रिटर्न फाइल करो उसका इम्पैक्ट वो क्रेडिट नोट का आप ले सकते हो। फ्रेंड्स, आवर लीगल सबमिशन इज एज फॉलोज। मान लीजिए आप एक कंप्लायंट टैक्स पेयर हो, सो व्हाट यू आर डूइंग, आप 11 नवंबर तक अपना GSTR 1 फाइल कर दे रहे हो, बट 11 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक अगर आपको पता चला अरे यार एक क्रेडिट नोट था रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 21-22 इनवॉइसेस जो मुझे छूट गया मुझसे, एंड श्योर आपके ऑफिस में काफी ऐसे केसेस होंगे कि क्रेडिट नोट डालना छूट गया नवंबर में जो आपने GSTR 1 फाइल किया उसमें। सो व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्योंकि आपको CGST जो लॉ है सेक्शन 34 है उसमें अभी भी आज भी आप 25 नवंबर 2022 में बैठे हो तो GST लॉ आपको अलाउ करता है कि जेंटलमैन 30 नवंबर तक आप उस क्रेडिट नोट को अपना GSTR 1 में दिखा के उसका आउटपुट टैक्स रिवर्सल अवेल कर सकते हो, बट पोर्टल इज नॉट अलाउइंग यू बिकॉज द पोर्टल, एक बार आप GSTR 1 फाइल कर दिए on 11th of November, thereafter the portal will not allow you to amend it till 30th of November. It will allow you to amend those data only in the next GSTR 1. Take another example, एक नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर है, वो 30 नवंबर को अपना GSTR 1 फाइल कर रहा है, तो उस नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर के लिए 30 नवंबर तक वो जो क्रेडिट नोट पास कर रहा है उसको रिवर्सल दिखा सकता है अपने GSTR 1 में। सो आप जो एक कंप्लायंट टैक्स पेयर हो 11 नवंबर को अपना GSTR 1 फाइल किए हो, you cannot disclose this credit note till 30th of November, which the Act allows you. But if you are a non-compliant taxpayer and you file your GSTR 1 delayed on 30th of November, तो आपको 19 दिन का टाइम ज्यादा मिल रहा है। So our respectful submission before the ministry in this case and before this August gathering is that the law, the GST portal, the machinery provisions of the CGST law, that is the GST portal, is treating equals unequally, which means a compliant taxpayer is treated unequally vis-a-vis a non-compliant taxpayer, and more so at a disadvantage of the compliant taxpayer. तो compliant taxpayer जो है उसको disadvantage है over a non-compliant taxpayer due to GST portal machinery provision. So friends, our respectful submission is that this should be clarified at least by the CBIC going forward, and a solution should be given
कि 11 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक GSTR 1 जो अक्टूबर का फाइल कर रहे हो, then option should be given to rectify that, so that Article 14 of the Constitution is not violated. Otherwise, this can be a major issue. Now the question is, अगर आपने मिस कर दिया कोई क्रेडिट नोट फाइल करना, तो आप अभी क्या करोगे? राइट, यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन, सर जब होगा डिस्प्यूट तब होगा, लेकिन अभी क्या करें? फ्रेंड्स, our counsel of High Court is only as strong as the client. आप उन्हें जितना एविडेंसेस दोगे, और वो एविडेंसेस उस दिन का नहीं होना चाहिए जब आप, इफ यू डिसाइड टू लिटिगेट, उस दिन आप हाई कोर्ट जाओगे, उस दिन का एविडेंस नहीं होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए आज का. So what are the precautions you should take today in so that you get the desired relief going forward, if at all? Friends, whenever you ask whoever, whichever, either tax professional or even you ask the officers, वो हरदम वही बोलेंगे कि मुझे भैया मुझे एविडेंस दिखाओ. राइट, in we as chartered accountants, we have read of evidences in our auditing standard, right? We may not have read the evidence law. I don't know अभी के syllabus में है कि नहीं evidence act, लेकिन हमने अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में एविडेंस पढ़ा है. तो आपको एविडेंस तैयार करना है अभी. तो अभी कि आपने ट्राई किया GSTR 1 अमेंड करने का 11 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का, लेकिन जीएसटी पोर्टल आपको अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन जीएसटी लॉ आपको अलाउ कर रहा है. तो आवर व्यू एंड ओपिनियन एंड सजेशन इन दिस केस इज, आप प्लीज हेल्प डेस्क में एक टिकट रेज करके रखो कि ऐसा हमसे गलती हुआ ड्यू टू वट एवर रीजंस, एंड आई एम ट्राइंग टू अमेंड. एक जीएसटी पोर्टल का भी स्क्रीनशॉट दे दो. आई एम ट्राइंग टू अमेंड द GSTR 1, but the system, the portal is not allowing me. Please give a solution to this. If you have this evidence going forward, maybe CBIC even asks you, or ministry or your field officers ask you for evidence. You show me. आपको पता चला 30 नवंबर के बाद या पहले, तो आपके पास कम से कम एविडेंस है आज के दिन का. So this is very, very important, friends, and I feel that this is a amendment as well as a burning issue today. Another parallel issue is that, of course, this is an issue which can be represented कि जी आप हमें 30 नवंबर तक का टाइम दे रहे हो क्रेडिट नोट GSTR 1 में चढ़ाने का, लेकिन आप 11 नवंबर तक GSTR 1 में सिर्फ वही क्रेडिट नोट चढ़ा सकते हो जो आपने पास किया है बाय 31st of October, राइट? क्योंकि आपने अगर क्रेडिट नोट पास किया 1 नवंबर को, तो लिटिगेशन होगा इसके ऊपर कि जी आपने तो 1 नवंबर का क्रेडिट नोट है, तो आपको अलाउ करेंगे हम दिसंबर का. टिल दैट टाइम वो टाइम बार्ड हो जाएगा. अगेन आवर व्यू इज दैट please ensure whatever credit notes you have availed of for financial year 21-22 invoices, which you have availed of in 11th November GSTR 1, the date of the credit note, that should be till 31st of October 2022, right? Previously, this was not the issue. Previously, आपका 11 नवंबर 30 नवंबर 30 सितंबर का डेट था, लेकिन अभी आपका वो डेट चेंज हो गया. सिमिलरली, आपकी अगर कोई इनवॉइस आपको कोई रेक्टिफाई करनी है 21-22 रिलेटेड, तो उसका लास्ट डेट है 30th of November. लेकिन अगेन, if you have filed your GSTR 1 by 11th of November, then you do not get a further opportunity from 11th of November to 30th of November to rectify this. Therefore, again, we feel that this is contrary and violative of
Article 14, and shelter can be taken by representation to the ministry in this regard, right? And also shelter can be taken under the provisions of the Constitution of India, Article 14. But again, you should have evidences. अभी आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आपने ट्राई किया फाइल करने का, लेकिन आपको फाइल नहीं करने दिया, रेक्टिफाई नहीं करने दिया आपका अक्टूबर का GSTR 1. Similarly, input tax credit for 2020, 21, 22 invoices, उसका ड्यू डेट है 30th of November. परंतु आपने अगर 20 सितंबर को एज अ कंप्लायंट टैक्स पेयर अपना GSTR 3B फाइल कर दिया, then from 21st to 30th of November, law allows you to take the credit of ITC with respect to invoices of 21, 22, but the portal does not allow you to amend the GSTR 3B. So our legal submission is similar to the earlier cases in this respect also. Well, just to tell you, you see, even there is a huge demand from industry for allowing rectification of GSTR 3B. We all know in November 2021, the Honorable Apex Court in the case of Bharti Airtel has held that GSTR 3B retrospective amendment allow nahi kiya, that is not against the Constitution of India, so it has turned down the appeal by Bharti Airtel, right? And the matter has been held against the taxpayer, right? But still the ministry is trying that GSTR 3B amendment should be allowed in some way or the other, right? And such a mechanism should be tried to be built in. Again, friends, इसमें भी वही है, you should ensure कि अगर आपने 20 नवंबर तक क्रेडिट लिया कोई इनवॉइस का, तो आपके परचेज रजिस्टर में उस इनवॉइस का एंट्री 31 अक्टूबर तक मैक्सिमम हो जाना चाहिए था. अगर आपके परचेज रजिस्टर में 21-22 के इनवॉइसेस का एंट्री 1 अक्टूबर को भी है, टुमारो 1 नवंबर को है, then tomorrow the department might dispute this कि जी 1 नवंबर को आपका अगर परचेज रजिस्टर में एंट्री है तो हम आपको उसका क्रेडिट 20th of नवंबर का GSTR 3B में नहीं लेने देंगे, क्योंकि 3B of 20th of November 2022 should have transactions till 31st of October 2022 only, right? So this is a word of caution for all the taxpayers and especially chartered accountants who are advising all the taxpayers. Section 41 amendment, right? Now again, this is something which is more of a policy issue. तो provisional credit जो था वो अब हटा दिया गया है, and section 41 आपने input tax credit avail करोगे on the basis of section 16(2) compliances. So friends, this kind of notices all of you would be getting, right? ये क्या notice है? In the state of West Bengal, at least, I am sure from the State Department, whoever is registered with the SGST Department of West Bengal, you have all got such notices. What is the notice? As per circular numbers 170. सबसे पहले समझते हैं सर्कुलर नंबर 170, जिसके हिसाब से आपको GSTR 3B अब से जो फाइल करोगे, मतलब 1 अगस्त 2022 से जो आप GSTR 3B फाइल कर रहे हो, उसमें पूरा mammoth changes है. Many of the taxpayers are still not following it,
In fact, we have been told by the West Bengal SGST department कि even बड़े taxpayers, including many hospitals, are still not following it, and other taxpayers are still not following this circular 170. तो अभी आपको सबको नोटिस मिला होगा ऐसा स्टेट डिपार्टमेंट से कि आपको सर्कुलर 170 फॉलो करना है, एंड इवन फॉर रेट्रोस्पेक्टिवली फॉलो करना है आपको, बिकॉज अगर आप सर्कुलर 170 नहीं फॉलो करते हो तो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होता है. आई विल कम टू दिस, राइट, कि स्टेट गवर्नमेंट को कैसे लॉस होता है रेवेन्यू का, एंड हाउ यू शुड इंश्योर कि आप अपना GSTR 3B कैसे सही से फाइल करोगे, क्या ट्रांजैक्शंस स्पेशली इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड, राइट, क्योंकि दिस होल GSTR 3B में जो आपका सर्कुलर आया 170 वो सारा इनपुट टैक्स रिलेटेड है. बट बिफोर दैट द नेक्स्ट recent amendment, right, is not related to GST but which will have a massive impact on GST. This is related to income tax, but GST में इसका massive impact होने वाला है, almost start हो गया होगा शायद. Section 194R, right, TDS on value of benefit or perquisite. So what does section 194R say? कि आप अगर कोई बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हो कोई रेसिडेंट टैक्स पेयर को B2B में, तो आपको 10% TDS काटना है ऑन सच वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड ऑफ 20,000 rupees, right, provided the recipient has a turnover of more than 1 crore or 50 lakh rupees if they are in business or profession. Correspondingly जो recipient है उसको section 28 clause 4 में income from business profession उसको report करना है, right? I will not go to income tax. That subject I'm sure would be dealt upon and is already has been dealt upon massively in various other webinars. मैं इसका GST का इम्पैक्ट में आ रहा हूँ और आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए अभी से, that I would like to dwell upon, friends. You are all looking after the income tax as well as GST, and sometimes अपने retainership में आप client का end-to-end accounts लेते हो, right? So the client will be fully, you see, reliant upon you for all the compliances. तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या precautionary measures ले, so that in future हम litigations avoid कर पाए. GST में due to the implication of section 194R and 28(4) correspondingly, since we all know AIS, TRS सारे स्टार्ट हो गए इनकम टैक्स में और ये सारे GST से शेयर हो रहे हैं. In fact, I was discussing with the Chief Commissioner of Income Tax, and he was giving instructions to his officers कि यार GST से डेली आपको चिट्ठी आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये डेटा शेयर करो, वो डेटा शेयर करो, आप तो कुछ नहीं मानते. So, interfering of data between GST and income tax, right? That is very frequent, and हमें अपना income tax और GST दोनों reconcile करना बहुत जरूरी है. So impact of 194R is not important. उसके corresponding, let us take an example. तो आप मान लो एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, राइट, सीमेंट कंपनी के आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसने आपको एक टारगेट डिस्काउंट दिया कि जी आप अगर हमारा सीमेंट बेचते हो 1 करोड़ रुपया का फॉर द फुल मंथ, इन 1 month you achieve 1 crore rupees of turnover of our cement, we will give you a Dubai trip free. तो आपने 1 करोड़ का टारगेट अचीव किया, आपको एक दुबई ट्रिप मिल गया, राइट. Now
तो दुबई ट्रिप का से कन्वेंस वगैरह सबका वैल्यू है 1 लाख ऑफ रुपीज। तो वो आपका जो मैन्युफैक्चरर है, प्रिंसिपल है, उसने क्या किया, आपका 10% 194 में टीडीएस काट लिया। ये 1 लाख रुपया का वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परचेज इन द फॉर्म ऑफ गिविंग यू अ दुबई ट्रिप, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, आपके एआईएस में ये इंफॉर्मेशन चला गया, आपके फॉर्म 26 एएस में भी ये इंफॉर्मेशन चला गया। So correspondingly, you are supposed to do what? आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में इसको, ये जो इनकम है आपका, वो आपको ऑफर करना है फॉर टैक्सेशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, राइट। एंड इसके अगेंस्ट में आप डिडक्शन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, अगेन दैट कैन बी ड्वेल्ट अपॉन इन अदर वेबिनार्स ऑन दिस सब्जेक्ट। बट द क्वेश्चन is whether this would be termed as a supply of service from you as a recipient of the benefit or perquisite or not. Can the department allege that आपको कोई benefit free में तो नहीं मिल रहा, it is not a gift because it is not out of love and affection, and it is an incentive, mind that, because your principals, manufacturers would be using the term incentive। वो सारे जो schemes आप देखोगे उसमें incentive ही लिखा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर, आपके 26 AS में ये ट्रांजैक्शन आएगा, immediately you may be getting a notice from GST कि जी आपको इंसेंटिव मिल रहा है, मतलब आप कुछ ना कुछ सर्विस जरूर दे रहे हो, इसीलिए तो आपको कोई इंसेंटिव या बेनिफिट मिल रहा है। एंड फ्रेंड्स, सीबीडीटी हैज क्लैरिफाइड दैट टीडीएस काटने के लिए जीएसटी नहीं लेंगे हम। सो यू सी, सीबीडीटी हैज इनडायरेक्टली सेड कि भैया ये डीम्ड वैल्यू ऑफ सर्विस है और इस पे जीएसटी लग सकता है। Therefore, you have to be very, very careful, friends. Question is, you will all ask me a question, sir. Problem तो बता दिए, लेकिन what is the solution? Well, there can be one solution. I am sure all of you would be have got many other solutions. I can speak of only one solution. If you have a agreement that you have rendered a service to this cement manufacturing company, right? And you have rendered sales promotion service, etc., etc. And you raise a service bill instead, right? So maybe Dubai trip is one form of the incentive. There can be so many other forms of incentive. If you raise a service bill, then you have charged GST and he can deduct TDS under 194C or something, So at least this benefit or perquisite, the conundrum, this can be solved in this manner, right? And I think both CBDT and CBIC would be very, very happy with this solution. However, this cannot be a solution, I understand, for many cases like this Dubai trip. Therefore, you have to take a call, right? You have to take a conscious call whether this is a supply or not. Well, in our view, if you see this clarification by the CBDT in the case of notice period pay of employees, अभी CBDT ने क्लैरिफाई किया ना कि अगर एम्प्लॉय का कोई नोटिस पीरियड पे है तो वो एम्प्लॉय सर्विस है। Also, there is a circular 92 which says कि अगर कोई सर्विस आप एलिगेशन करता है डिपार्टमेंट, तो एक पॉजिटिव एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी ऐसा कुछ सर्विस हुआ है। तो वेल, दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू कैन कंटेंड विद, अगर ऐसा कुछ होता है तो भी। बट द फैक्ट इज कि ये एक मेजर
issue हो सकता है, and possibly, you know, trade and industry as well as our institute, we should all speak in one tone, and maybe DTPA, I'm sure you would be sending the pre-budget recommendations, and maybe this point can be included in the pre-budget recommendations. At least the circular is very, very important by the CBIC, clarifying the GST impact of this 194R read with 28(4) of the Income Tax Act. There can be many, many other cases, right? You know, because of the paucity of time, and there are certain other topics which need to be discussed. I will not go into each and every case per se. Right? Friends, next important amendment or development, I would say, it is not an amendment, it is an instruction, which I discussed initially also under GST. I am sure all of you would be dealing with this. At least we are dealing with this day in, day out. And for large companies, right? GST law, right, is being implemented by the field formations in a way कि अब GST में hearing होना बंद हो गया almost. Gone are the days when you had a hearing. Now summons have taken the place of hearings. Friends, summons is something which cannot be invoked at the drop of a hat, right? And summon में क्या होता था? Directly managing director, CFO, CEO को call कर लिया जाता था. And the enforcement agencies, when they are summoning somebody, you know, there is a huge pressure which is mentally built up on these people directly. You know, maybe they feel the pressure. You know, managing director, how would a managing director know GST, right? वो अपना business कर रहा है. Even in the larger organization, CFO is not involved in GST operations. उनका एक टैक्स का पर्सन होता है जो GST देखता है. सो CBIC ने क्लैरिफाई किया है, एंड आप लोग सब इस सर्कुलर को यूज कर, इस इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को यूज कर सकते हो whenever there is a summon कि डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई सीनियर CEO, CFO को नहीं समन किया जा सकता है. पहले वो एम्प्लॉय को समन करना चाहिए जो टैक्स का मैटर एक्सप्लेन कर सके. Thereafter, if they are not confident, then they can summon the senior officers of the company, right? So all of you may use this circular and mind that still there is a non-compliance by the field officers. However, I would like to draw your attention to two important words in this instruction. It is mentioned that this instruction should be strictly compliant with, and any non-compliance by the field officers of this instruction would be seriously viewed, right? So, whenever you are representing on these summons, naturally, most of the time the client would take you as professionals with them. लेकिन आप देखे हो कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव AR को समन रूम में नहीं जाने दिया जाता कितने बार. So, you know, but you can help your client by invocation of this instruction number 3/22/23. अगर डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर या CFO, CEO को समन किया जाता है, you can always file a protest letter on that, and I'm sure that due cognizance would be given to this protest letter. Similarly, we have prayed for a, you know, similar instruction on invocation of inspection, search and seizure, but you know, CBIC has said that inspection के लिए ये जी नहीं आ सकता क्योंकि इंस्पेक्शन थोड़ा और डिटेल्ड है और ऐसा कोर्सिव कुछ एक्शन नहीं होता इंस्पेक्शन में.
I don't know, my screen share has changed. Okay. So friends, the next important development, very, very important to all chartered accountants who are filing the GSTR 3B and GSTR 1 returns for their clients. As per circular number 170, which I was discussing, it is important to file the GSTR 3B correctly. And majorly the amendment is, you see, while filing for the input tax credit in GSTR 3B. So input tax credit के primarily GSTR 3B में टेबल नंबर 4 होता है. 4A में आप 5 कॉलम्स होते हैं जिसमें आप आईटीसी ले सकते हो. 4B में 2 कॉलम्स होते हैं, 2 रोज होते हैं जिसमें आपको आईटीसी रिवर्स करना रहता है. 4C एक बैलेंस 4A माइनस 4B है और 4D में कुछ डिस्क्लोजर्स हैं. Strict guidelines have been issued and all of you should follow this, because in case of non-compliance, this may result in a penalty of 20,000 rupees per return, which is not a joke or not a small amount for SME and micro scale organizations. तो क्या सर्कुलर है जी, क्या रिक्वायरमेंट है? फ्रेंड्स 4A में 5 रोज हैं. 4A1 इंपोर्ट ऑफ गुड्स, नेक्स्ट 4A2 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का क्रेडिट लेने का, 4A3 रिवर्स चार्ज, 4A4 ISD का क्रेडिट लेने का और 4A5 ऑल अदर ITC. The mandate is both eligible as well as ineligible ITC सारे पॉपअप हो जाएंगे आपके GSTR 2B से. From 1st of January 2022, you all know you can only take the input tax credit which is reflecting in your GSTR 2B, right? तो GSTR 2B में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको सारे के सारे ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगे इन 4A1 2 3 4 5. वो आपको सारे के सारे लेने हैं, राइट? मतलब अगर आपके क्लाइंट ने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, उसमें अपना जीएसटी नंबर दिया है, वो भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. अगर आपके क्लाइंट ने हल्दीराम से कुछ फूड ऑर्डर किया है, वो भी क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. तो ये सारे को आपको रिकॉग्नाइज करना है, माइंड दैट, इन टेबल नंबर 4A 1 2 3 4 5. इवन अगर आपके क्लाइंट ने आपको इनवॉइस इशू करने में डिले कर दिया बट GSTR 1 फाइल कर दिया, वो भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और वो भी आपको लेना है क्रेडिट, एक बार तो लेना है 4A 1 2 3 4 5 जिसमें भी. अभी आपका एक क्वेश्चन होगा, आई एम श्योर दिस इज अ बर्निंग इशू. इफ योर क्लाइंट इज एन इंपोर्टर, राइट, इफ योर क्लाइंट इज एन इंपोर्टर, देन आपका इंपोर्ट का बिल ऑफ एंट्री का क्रेडिट, राइट, वो काफी बार आप देखे होंगे कि दैट इज नॉट ऑटो पॉपुलेटेड इन द GSTR 2B, या फिर कुछ ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं GSTR 2B में, कुछ नहीं हो रहे हैं, राइट. नाउ आउट ऑफ दिस जो कुछ नहीं हो रहे हैं उसमें से आप आइस गेट में जाओ, आपको दिखेगा कुछ आइस गेट में हो रहे हैं जो यहाँ नहीं हो रहे हैं. तो उसके लिए एक फीचर है आइस गेट में, whereby you recognize that, and फिर आपका 2B में ऑटो पॉपुलेट अपने आप हो जाएगा. So that mechanism you should follow if you are not already following it. लेकिन कुछ कुछ इनवॉइसेस जो बिल ऑफ एंट्रीज हैं जो आपके आइस गेट में भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसका क्या करें? फ्रेंड्स, we are doing it for many of the taxpayers and our legal submission in this matter is
you should file a complaint or raise a ticket with the help desk. And as I said, आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आपने टिकट रेज किया ये टेक्निकल ग्लिच के लिए हेल्प डेस्क को, एंड उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ एंट्री एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग चालान आप उसका क्रेडिट इन आवर लीगल सबमिशन ले सकते हो, बिकॉज जीएसटी लॉ does not bar you from taking a eligible input tax credit. Of course, अगर आपके गुड रिसीव हो गए वगैरह वगैरह, for those 16 A, B, A, B, BA, now C and D, ये 6 कंडीशन इनपुट टैक्स क्रेडिट के अगर आपके ए में तो 2B है, तो अगर बाकी सारे कंडीशंस आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट के आप फॉलो कर रहे हो, comply हो रहे हैं, then our legal submission is after raising a ticket with the help desk and keeping a screenshot as a evidence, taxpayers are eligible to take the input tax credit. Friends, अब आपका क्वेश्चन होगा कि जी हम अब क्या करें, हमने तो फूड का भी क्रेडिट ले लिया जो इनएलिजिबल है, हमने तो मेडिक्लेम का भी क्रेडिट ले लिया जो इनएलिजिबल है। अब आपको लॉ बोलता है जो ये सर्कुलर 170 है कि जी अब आप देखो ये परमानेंट रिवर्सल है कि टेम्पोररी रिवर्सल। तो परमानेंट रिवर्सल अगर है तो 4B1 में दिखाओ, और टेम्पोररी रिवर्सल है तो 4B2 में रिवर्स करो उसे। ओके, तो अब अगर इनएलिजिबल है तो ये परमानेंट है कि टेम्पोररी है, मतलब मेडिक्लेम का क्रेडिट या फूड का क्रेडिट ये परमानेंट है। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 सबने पढ़ा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में परमानेंट टाइमिंग डिफरेंस, टेम्पोररी टाइमिंग डिफरेंस, वैसे ही परमानेंट जीएसटी में परमानेंट रिवर्सल, टेम्पोररी रिवर्सल। तो इनएलिजिबल जो है मेडिक्लेम और फूड बिल वो आज भी इनएलिजिबल है और हरदम के लिए इनएलिजिबल है, तो इट इज अ परमानेंट रिवर्सल। उसका अमाउंट आप 4B1 में दिखा दो रिवर्सल में। लेकिन मान लो अगर आपके ब्रांच ने आपको स्टॉक ट्रांसफर किया या आपके सप्लायर ने आपको स्टॉक ट्रांसफर किया 31 अक्टूबर को, लेकिन आपको या आपके ट्रांसफर किया 31 अक्टूबर को, लेकिन अगर मान लो उसका आपने जो है आपको गुड्स मिला 1 नवंबर को, तो आपके GSTR 2B में और कॉन्सिक्वेंटली 3B के 4A5 में वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा ITC। लेकिन आपको गुड्स मिला 1 नवंबर को, तो मतलब आपको दिसंबर के रिटर्न में उसको लेना चाहिए, बट आपके 3B ऑफ नवंबर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। देन व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज अ टेम्पोररी रिवर्सल, आज नहीं लोगे लेकिन आपको दिसंबर में आप ले सकते हो। सो दिस you would reflect in 4B2। ऐसे और क्या क्या हो सकते हैं, आपको इनवॉइस नहीं मिला, सप्लायर ने 1 तो फाइल किया, आपके 2B में भी रिफ्लेक्ट किया, लेकिन सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया, आपने 180 दिन में उसका पेमेंट नहीं किया सप्लायर का। सो ऑल ऑफ दिस आर टेम्पोररी रिवर्सल्स जो आप आज क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, लेकिन आप फ्यूचर में इसका क्रेडिट अवेल कर सकते हो, राइट। वो सारे आपको 4B2 में रिफ्लेक्ट करना है। 4C क्या है, 4A माइनस 4B1 माइनस 4B2। 4D2 ये कोई आपका टैक्स इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको 5-6 चीजें डिस्क्लोजर करनी है। लिमिटेशन पीरियड के लिए आपने क्या ले लिया 16(4) में, वो आपको डिस्क्लोज करना है, लेकिन उसका ऑलरेडी आप उसका रिवर्सल दिखा चुके हो ऊपर, लेकिन यहाँ डिस्क्लोजर के लिए देना है। 16(2)B 2C का डिस्क्लोजर देना है जो आप क्रेडिट नहीं ले रहे हो, वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, देयर आर फ्यू इश्यूज इन दिस कि जी रिवर्स चार्ज, अभी मान लो आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है,
राइट। या आपकी कोई रिवर्स चार्ज पे, मान लो कोई आप रिवर्स चार्ज में रेंट अ कैब का पेमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको आईटीसी एलिजिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, दिखाना है कि नहीं दिखाना है? तो यस, आपको दिखाना है 4A3 में, और उसको परमानेंट रिवर्सल में 4B1 में आपको दिखा देना है। तो एक बार आपको दिखाना है, दैट इज मैंडेटरी, लेकिन उसके बाद 4B1 में रिवर्स कर देना है, राइट। सो देयर इज नो टैक्स इम्पैक्ट पर से, बट देयर इज अ डिस्क्लोजर इम्पैक्ट। So there might be a question कि सर इसका पेमेंट कैश में करना है? यस, इसका पेमेंट आपको कैश में करना है, इवन दो आपके पास आईटीसी हो या ना हो। फ्रेंड्स, do I have 5 more minutes? Yes, भैया. Okay. So I will take a few other amendments which are there and few other burning issues. Section 37, Rule 37 corresponding to section second provision to section 16(2) क्या कहता था पहले कि जी अगर आपने कोई सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो एज अ कस्टमर आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना रहेगा, राइट। नाउ से फॉर एग्जांपल आपके सप्लायर ने आपको 1 लाख प्लस जीएसटी का इनवॉइस दिया, आपने उसको 95,000 रुपीज, तो मान लो 50,000 रुपीज तो अभी के अभी पेमेंट कर दिया, लेकिन 50,000 रुपीज आपने उसको पेमेंट ही नहीं किया। तो 180 दिन के बाद आपको क्या करना था? यू हैव टू रिवर्स ओनली द आईटीसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 50,000 रुपीज, राइट। मतलब 50,000 के ऊपर सिर्फ 9,000 रुपए रिवर्स करने थे। बट आफ्टर, अगेन ये रूल 37 का अमेंडमेंट was unnoticed amendment. You can go to my YouTube channel also, right? And we have discussed this amendment threadbare and the legal implication. इन्होंने क्या किया, इन्होंने रूल 37 में अमेंडमेंट किया कि जी प्रोपोर्शनेट वर्ड इन्होंने रिमूव कर दिया। सो व्हाट इज द implication of that? Effectively the law says कि जी अब आपने अगर उसको 1,50,000 पेमेंट किया दिन में, तो इफेक्टिवली पूरा का पूरा आपको क्रेडिट रिवर्स करना है, इवन जिसपे आपने उसको पेमेंट कर दिया 180 दिन में। फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी critical amendment, right? You must take note of this amendment. अभी इसका implication एक और है, कितने बार मैक्सिमम टाइम ये होता है, एंड दूसरी बात तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बिल के साथ भी ये होता है कि आपने 1 लाख रुपया प्लस 18,000 का बिल रेज किया, क्लाइंट से नहीं यार 1 लाख रुपया थोड़े ज्यादा हो जा रहे हैं, तो व्हाट द क्लाइंट सेज दैट the client says that जी हमें आप I will pay you only 90,000 rupees plus GST, 1 लाख रुपए ज्यादा हो जा रहे हैं, तो आपके बिल को वो काट के 1 लाख का सिर्फ 90,000 रुपए पे करता है। आप क्या करते हो, आप अपना 90,000 रख लेते हो। Many a times what you do, you raise a credit note on the client for 10,000 rupees, but many a times the smaller suppliers what they do, वो लोग उतना माथा नहीं लगाते, they don't know the GST law that much, वो इतना छोटा मोटा अगर कोई अमाउंट है, they don't reverse they don't issue a credit note। मान लो 500 रुपया डिडक्ट किया क्लाइंट ने 1 लाख रुपया में से, उसका रिवर्सल नहीं दिखाते, 500 रुपए का क्रेडिट नोट नहीं रेज करते। अभी इम्प्लीकेशन इसका क्या है कि जो कस्टमर है, इवन अगर उसने 500 रुपए नहीं पेमेंट किया उस इनवॉइस में, तो उसको पूरा 1 लाख रुपया का आईटीसी रिवर्स करना है, एंड उसका इंटरेस्ट बर्डन भी है। So again, be very very careful with this amendment under Rule 37.
right? And this has gone unnoticed, but it will have wide implications, and this will give rise to tremendous litigations if not dealt well carefully. Now, another recent development is on fake invoices. We all know that there was a circular on fake invoices, which has dealt with the fact that even the recipient as well as the supplier of fake invoices both should be penalized under different sections, of course. I will not go into the nitty-gritties of the technical issues of the circular, lekin you have to be where you have to be very careful. काफी बार क्या होता है कि बिल टू शिप टू केसेस में मान लीजिए हमारा स्पेशली यू विल सी दिस इन स्टील इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, ओइल इंडस्ट्री, बिल टू शिप टू केसेस, क्योंकि आयरन इंडस्ट्री में स्क्रैप का रीप्रोसेसिंग होता है बहुत ज्यादा। क्या होता है कि आपका मान लो क्लाइंट मैन्युफैक्चरर है, आपका क्लाइंट के पास आयरन का फैक्ट्री है, वो स्क्रैप खरीद रहा है say from मुंबई, उसका सप्लायर है मुंबई में, लेकिन सप्लायर का सप्लायर है झारखंड में, राइट? मतलब मुंबई वाला आपका जो सप्लायर है उसका सप्लायर है झारखंड में, मतलब स्क्रैप पड़ा है झारखंड में, लेकिन आप कनेक्ट किया मुंबई के पार्टी से, तो मुंबई का पार्टी क्या करेगा, वो झारखंड में जो आपका धनबाद में अगर सप्लायर है जिसके पास स्क्रैप पड़ा है, वो उसको बोलेगा कि डायरेक्टली वेस्ट बंगाल में आप स्क्रैप भेज दो, राइट? और आप क्या करो, उसको कहेगा कि आप बिल टू करो मुझे महाराष्ट्र में, और वेस्ट बंगाल में आप जहाँ है आपका फैक्ट्री है उसे शिफ्ट टू कर दो, और आपको बिल मिलेगा महाराष्ट्र से। अगर आपका जो झारखंड वाला जो पार्टी है, where the dispatch is happening from, if that party also defaults in the payment of GST, in this case, many a times under section 122(1) capital A, 122(1)A. लेकिन फ्रेंड्स इसमें दो कंडीशन है, राइट? फर्स्ट कंडीशन इज कि वो तभी आपको एलिगेशन कर सकता है जब आप बेनिफिशियल ओनर हो। इस केस में कि वो प्रूफ कर देगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर आप है, स्क्रैप का यूज आप है, तो आप ही बेनिफिशियल ओनर हो। लेकिन सेकंड कंडीशन भी है, यू शुड नोट डाउन दिस सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि वो प्रूफ करना पड़ेगा कि यू आर द मास्टरमाइंड ऑफ द ट्रांजैक्शन, राइट? The transaction has been done at your instance. Now, this is where our legal submission is that the department is not trying to prove it, and enforcement agencies are coercively trying to, force people to pay tax, even though they are not voluntarily willing to pay. जी, आपके पास टाटा स्लिप है, आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, आपने सप्लायर को टैक्स पे किया, आपका महाराष्ट्र का जो सप्लायर है उसने भी टैक्स पे किया, वहां तक L1 सप्लायर तक आप जा सकते हो, L2 डिपार्टमेंट कैन नॉट लीगली एलिज। सो फ्रेंड्स, यू एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव अ रिस्पांसिबिलिटी इन दिस रिगार्ड। अगर ऐसा कोई केस आए आपके पास, यू मस्ट टेक अ स्टैंड which is as per the law. But important, very important friends, कि आपका जो सप्लायर है एटलीस्ट महाराष्ट्र वाला, इफ पॉसिबल झारखंड वाला सप्लायर का सप्लायर, अगर कोई बड़ा सप्लायर है, छोटा मोटा में पॉसिबल, बट बड़ा आपका जो भी सप्लायर है उसमें प्लीज ट्राई टू डू फिजिकल इंस्पेक्शन। You must advise your clients that physical inspection बहुत जरूरी है। अभी मेरा एक केस हुआ था where client ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, that client came to us only for handling the litigation where the department was denying the ITC। उस client ने क्या किया, ऐसा एक सप्लायर ने उसका GST नंबर कैंसिल हो गया with ab initio with retrospective effect,
लेकिन क्लाइंट ने उसे परचेज किया माल बिफोर हिज जीएसटी नंबर वाज कैंसिल्ड। एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज के केस में कैलकाटा हाई कोर्ट हैज सेड दैट अगर आपका जो परचेज है वो जीएसटी नंबर क्लाइंट सप्लायर का कैंसिल होने के पहले का परचेज है तो आपको आईटीसी डिनाई नहीं हो सकता। मैंने कहा जी आप जाके फोटो लेके आ जाओ खाली। क्लाइंट ने कहा जी फोटो है मेरे पास कि वो मेरा जो सप्लायर है वो एग्जिस्टिंग है। तो फ्रेंड्स वी हैव यू नो argued on this matter and the department had to accept our view because अगर supplier existent है then he is the registered taxpayer of the department also and the recovery should happen from the delinquent supplier and not from the recipient in this instant case. So it is important friends, I will again say that the board thinks, the ministry thinks that input tax credit बहुत ज्यादा हो रहा है, कैश में जीएसटी पेमेंट बहुत कम हो रहा है, and you will see more and more cases going forward denying input tax credit. So इसमें important है कि आप जब रिटर्न करते हो, जब आप कंप्लायंस करते हो, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को बहुत माइन्यूटली मॉनिटर करो और आप क्लाइंट को रिटर्न फाइल करते समय बता दो जी ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिबेट हो सकता है, लेकिन अगर आप ले रहे हो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लीगली ले रहे हो then you must be aware of these provisions of these recent developments कैसे चल रहा है across the country cases और you must fight for justice from the revenue authorities. Well, I think I have already exceeded my time. I think the seminar was till 7 o'clock, but I would stop here. In case of any questions related to my deliberations, I would be open to any questions. Thank you very much. Over to you, please. Thank you so much, Bhaiya. Before I go ahead with the concluding remarks, I would request if any member has any questions, they can just unmute themselves and ask our learned speaker. Or if they want, they can put in the message box also, chat box. So I take this opportunity to thank our both the speakers. Aanchal ji Yeah, and, Abhishek, continue. Aanchal ji and Vivek ji both has contributed in an amazing manner. The 99C got the entire revision was done in a fast track mode, and it was well explained with the practical case studies with respect to, and all the queries I have seen that was answered by the eminent speakers. The best part was to sharing the Excel sheet, which would have probably make the life more easy, for the members. Coming to Vivek Bhaiya deliberation, we always love to hear him. Is our own from Kolkata, and amazing deliberation, Bhaiya. The amendments. In fact, you have connected all the amendments with the upcoming issues which we all will be facing for the with respect to litigations. You have covered the rules, the instructions, the circulars, and thank you for deliberating in such a way. Friends, before we conclude, I would just like to just update that DTPA is taking various other initiatives with respect to all the fields, and we are have lined up with upcoming group discussions also. And I urge each and every one of us to register for the RRC happening in the month of January. Over to Shyam. Thank you. Thank you. Thank you. And on 30th of January, we are this December actually, sorry, November. There's so many dates actually. 30th November, we will have a GD where the initiator is Abhishek Agrawal. So we have all the details. We are sharing the details over WhatsApp and email. And this will be a physical GD in DTPA hall. So those who wants to attend, I'll request them. It will be going to be a good GD based on GSTR 2 and 3B notices. So those who want to join, they are welcome there. There are no charges there for participation.
Then on from 13th to 15th of January, we are doing a residential refresher course in Shantiniketan. So those who want to join, the details are available at our website, dtt.org. They can register and participate. Limited seats are available. Thank you. Thank you. And Thank you, Vivek, President. for a wonderful presentation, I must say. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Abhishek. Thanks, all. I would request Manjudi to please give the vote of thanks, our secretary. Manjudi? Hello. Yeah. Yes. I would like to thank Aanchal. She deliberated with all the intricacies about the GSTR 9 and 9C, with the pointer which is to be remembered and the recalculated and reconciled. That was really nice of her. And she made inside views. She gave a view in a different perspective. Further, I would like to thank you, Vivek ji, for elaborating us, or rather making us aware of the LAM. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you to all the participants for attending this webinar. Have a good time. Thank you. automated system planning